Yeah, so namaskar all of you. My voice is clear to you. Am I audible to all of you? Yeah. So today's syllabus is basically based on salient features of Constitution and some current affairs questions. Okay, questions I had already provided in the morning, so you could have just done your own preparation. Okay, ଏବେ basically ଆମେ ତା ଉପରେ discussion କରିବା and after the class, okay, ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ link ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦିନର questions ଆଉ answer ସେ link ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ. Okay, so let us then start. First question ଆମର ଥିଲା, okay, differentiate between Indian form of secularism from Western secularism. Okay, so Indian secularism or Western secularism ର difference ଟା ଏଠି ଲେଖିବାର ଅଛି. So let us start the discussion. Okay, ଯୋଉମାନେ prepare କରିଛନ୍ତି already, okay, କିଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, so you can participate in the discussion. Okay, finally we will discuss the important aspects. Okay, କଣ ଲେଖିବାର ଅଛି. ତ ଏବେ ଯୋଉ 10 markers ଆମର ଆସିବ mainly ଆଉ 150 ଆଉ 250 words ର, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଏମିତି ତାକୁ okay compare କରିକି ଲେଖିବାଟା better ହବ. Okay, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ 10 mark ପାଇଁ 6 minutes around we have to finish. ଆଉ 20 marks ପାଇଁ okay around ଆମକୁ 12 minutes ମିଳିବ, right? So let us start then. Western secularism ଆଉ Indian secularism ର difference କଣ basically? ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଦେଖିଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସେକ୍ୟୁଲାରିଜମର କଣ ଥିଲା କି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଓକେ mainly France କରିକାର it was based on okay the experience during the Enlightenment period, okay, and even before that the nexus between the religious you can say institutions, okay, mainly Europe ରେ ସେଟା church ଥିଲା and the royalty, okay, monarchy je rulers ତାଙ୍କ ଇରୁ ଥିଲା. ତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲଗା ଥିଲା. ତ ସେଠି especially France କରିକାରେ French Revolution ର ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ଷ୍ଟୋରିଜ. ଓକେ, କଣ ପାଇଁ ସେଟା ଓକେ revolution in itself was fine but aftermath okay ବହୁତ ହି bloodshed ଆଉ ବହୁତ ହି problems ସେଥିରେ ଥିଲା. So anyway, let us start the discussion. First point, anyone? What is the major difference between Western secularism and Indian secularism? You can unmute yourself and participate. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, in Western secularism, there is complete separation between religion and the state, sir. Complete And separation. Yes. between That is religion, yes, sir. And in that is- Indian, yes, sir, and in Indian secularism, we give equal respect to all the religions and protecting all the religions equally, sir. okay. Sir, the second point is, in Western secularism, state does not interfere in the affairs of the religion, sir. Okay. But in Indian secularism, state shall interfere in the affairs of the religion in order to remove disturbances in it, sir. Okay, fine. Sir, in Western secularism, there is no financial aid given to the any religion by the state, sir. Correct. But in Indian secularism, religious organization can receive financial aid from the state, and in return, they can be taxed, sir. Okay. And in Western sir, final point is in Western secularism, there is a single uniform law to everyone, sir. Okay. Regarding religion, and in Indian secularism, every religion has its personal laws about marriage and property rights, sir. Like Hindu Marriage Act, Muslims, they're different, sir. Okay, personal laws are treated differently in India. Okay. Anyone else? Any other points that you would like to add? Anyone? So most of the points we have already, Gautam has already said. So let us come to
So completes first and most important one, that is the complete separation, okay, of state and religion, okay, and universal religious freedom. Okay, so that is the what you can say the most important feature of Western secularism. Okay, so in Indian secularism, right, all religions are treated equally without any prejudice. Okay, that means no special, okay, preference to any religion. And from there, like you said, so the state will make provisions. Okay, state will spend money or spend, okay, funds for all religions. It cannot spend for only a particular religion. Okay, so for different religions it spreads in different ways. Okay, for example, the festivals of different religions, right, for that the government makes arrangement, sometimes in form of subsidy, sometimes in other forms. Okay, so secularism in Indian society refers to treatment of all religions equally and without prejudice, right. Second point, Western civilization's historical inheritance has led to the development of band of secularism that emphasizes the separation of church and state. And India's past has produced a different result. See, what is the main reason? If you see, during the Enlightenment period, okay, when new knowledge and the spirit of scientific inquiry was being promoted, so there are a lot of things, okay, which the church propagated, which were questioned by the scientists or the the those who were discovering new scientific things. Like, let's say, generally the church had the notion, and it spread the notion, that earth is the center of the solar system, okay, and sun and the other planets are revolving around it. So when Copernicus and Galileo, they found this, right, that it's actually the sun which is in the center of solar system, so they were persecuted. So it was a nexus between the monarchy, especially their soldiers and all. Okay, so that whatever the church says, the people have to believe it. Okay, they are not expected to question it, right. In India, there is no clear line between state and religion, and government involvement in religious activities is not prohibited. Okay, so both state influences religion, religion also influences state. Okay, sometimes, most of the times it is acceptable. Sometimes, okay, it is that point where state influences religion and religion influences the state, it goes little bit out of hand. Okay, both the state and religion in India can and frequently do engage and intervene in each other's affairs, okay, within legally mandated and judicially established bonds. Okay, take for example, when we brought the Rafale, okay, so there was this what you call Shastra Puja. Okay, when our defense minister at that time, uh, Rajnath Singh, so he had a puja, okay, in the Hindu tradition. So that was criticized by some people, that it should have been a like Sarva Dharma Puja or something. Okay, so in India you can have lot of examples where state affects religion and religion also affects the state. Okay, that is point number two. Third is religion has been consigned to the private domain and has no place in public life. Best example, so this is not for all Western countries. Best example of this would be France. Okay, so it is in your private sphere what you want to do. Okay, state is not interested in that, but in the public, okay, it is restricted. So all forms of religious expression are equally supported by the state. Okay, in India. So that is Indian secularism. Even there have been examples of very senior bureaucrats like cabinet secretaries quoting what you call this tika and all, right. So that is accepted in Indian secularism. In one way you can say ours is an inclusive secularism, more inclusive form of secularism, okay, more assimilative form of secularism. In addition, legislation in Western civilization is made apart from religious considerations. Okay, so mainly religion will have no place, okay, in making their laws and all.
However, in India, the law strives to accommodate various religious, okay, precepts to which adherents of various religions subscribe. Okay, so that is to take care of the beliefs of all. One of the best examples is that although Uniform Civil Code has been enshrined in our constitution in Article 44, still then, till now, we are not enforcing it, okay, down the neck of all the people, because we believe that that there has to be a broad consensus on this. Okay, there has to be a broad consensus on this. So government, whatever laws it will make, it has to consider that people of all religions, okay, are benefited from it. Overall, the Indian society has to benefit from it. Okay. Next, according to Western paradigm, the state cannot provide financial support to religiously run educational institutions, but that is not the case in India. In India, all religious minorities have the right to build and run their own educational institutions, which may receive government funding. Okay, so government may also fund it, right? And they have the right of establishing and also administering their, okay, educational institutions. Some of the best educational institutions of India are minority educational institutions, right? So these are some of the points, okay, that we can write. Any other point that you would like to mention? Anyone? Any other point that you would like to mention? Sir, Western secularism was a result of majorly monotheistic religions dominating over a country or a polity. But in case of Indian secularism, India developed such secularism because India was home of several religions, both polytheistic and monotheistic. Okay, that is one point, because mostly in Europe, okay, it was one major religion would be there, right? So that is here fine. And in India, there are many religions, okay. So, and in these religions, there were, like, as you said, different beliefs were there, okay. So, like for example, Hinduism believes in multiple gods, okay. Abrahamic religions would believe, okay, they are basically they'll believe in one god, okay. Anyone else? Any other thing that we can add in the first answer? Hello. Yes. ସାର୍ ଯଦି ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନ ପକେଇକି ଏଥର କହିଥିବ କି ଇଣ୍ଡିଆର ସେକୁଲାରିଜିମକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଥିଲା ହିଜାବର ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବାକୁ କହିଥିବ କ'ଣ ଲେଖିବା ସେଟା ଯଦି इंडियन କାହିଁକି सेक्युलरिज्म को जदि डिस्क्राइब करबा पई कहिथिबो ताले फीचर्स जा अछि इंडियन सेक्युलरिज्म रो सेटा आपण लिखि परिबे ठीक अछि हिजाब रो तो एबे हमें किछि लिखि परिबेन ता ऊपर फाइनल जजमेंट आसी जिवो जतले सुप्रीम कोर्ट रो एबे जदि धरंतु क्वेश्चन टा पडला ताले आपण को दीटा जिंस लिखिया पड़िबो कि क्वेश्चन टा कोन कोर्ट ऊपर थिला माने कोर्ट कोन टा डिसाइड करथिला कि क्लासरूम भितरे रिलीजियस क्लोथिंग टा अलाउ होबो कि नहीं स्टेट रन किंबा स्टेट एडेड इंस्टीट्यूट्स रे ठीक अछि तो हमें रिलीजियस आज्ञा सर इंस्टीट्यूट्स कथा पचारनु रिलीजियस इंस्टीट्यूट रे तांको रिलीजन हिसाब रे जे जा पिंदिबो सेतरे गवर्नमेंट रो किछि कहबार नै इवन कर्नाटका रो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट रे भी एफिडेविट देले कि स्कूल प्रीमाइस भीतर भी पिंदी परिबे किछि असुविधा नै किंतु क्लासरूम भीतर पिंदी परिबे ओके तो आउ जदि टिके टेक्निकल हमें लेखिबा कि जते बेले हमरो सुप्रीम कोर्ट रे केस टा आसिला टू जज बेंच सामने ओके तो कर्नाटक हाई कोर्ट तो मना कर देला कि नहीं एटा अलाउ ना ताकू चैलेंज करकी जेतले पिटिशनर आसिला सुप्रीम कोर्ट को तो हमर टू जज बेंच जो ओके तो से जजेस माने कोन कहले ठीक अछि तो जणे आज्ञा जज जे सर ताकू अग्री कले सेतरे कि हां बैन टा ठीक अछि बैन ही रहबा कथा सी 11 टा क्वेश्चंस फॉर्म करकी से 11 टा क्वेश्चन थ्रू रो से तारा आंसर देले ता भितर 11 टा क्वेश्चन तो हमें लिखि परिबानी बट ता भितर मेजर जिंस तांको कहया कथा कि एटा जदि आपण प्रेसिडेंस करूचंती जण को गोटे रिलीजन को अलाउ करिया पई कने सेक्युलरिज्म ता तो सब रिलीजन पे इट इज नॉट ओनली फॉर वन पर्टिकुलर रिलीजन ताले काली आ गोटे को रिलीजियस डिनोमिनेशन की रिलीजन रो लोक आसी कहबो मोर एटा मोर
ओके रिक्वायरमेंट अछि मु एया पिंदी के आसीबी ओके तो आउ तो ताकू मना करियबन ओके वेरएस अदर जे डिसेंटिंग जज थिले एटा मु गोटे पॉइंट कथा कहली से एमती 11टा पॉइंट रे ताका जजमेंट दैछन जे डिसेंटिंग जजमेंट जो जज देले कि ना ओके सी अलाउ होबा कथा पिंदिबा पई ओके हिजाब ता पिंदिबा पई सी तांको फोकस ता रहिला कोहा ऊपर ना एजुकेशन ऊपर से बाकी जिनसो बेसी देखिलन से कहले तांकर एजुकेशन ता बहुत इंपोर्टेंट ए पिलांकर तेणु अलगा सब इश्यू पई तांको एजुकेशन ता बंद होबा कथा नु ठीक अछि तो एटा को हम बट सर एठी आ गोटे क्वेश्चन होची सपोज तांको हिजाब पय आज एमति कोहाला ताल तो फ्यूचर सर जो पंजाबी मानकर सिख मानकर जो टर्बन आउ कृपान अछि सेटा भी बैन हबो सुप्रीम कोर्ट बहुत भलरे तांकर जजमेंट रे कहिसंती कि सेटा एसेंशियल टेनेंट्स ऑफ सिखिज्म सब रिलीजन रो गोटे एसेंशियल टेनेंट्स किछि थाए ठीक अछि तो यस सर सिखिज्म रो एसेंशियल टेनेंट्स भितरे तांकर टर्बन जाउची तांकर छोटो कृपान जाउची ओके एंड अदर्स आर आल्सो देयर ठीक अछि सो बट सेही जिंसटा से माने डिबेट करले कि वेदर हिजाब इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम से जिंसटा कर्नाटक हाई कोर्ट भी डिस्कस कला ओके आउ सुप्रीम कोर्ट मे बी एबे जो बड़ बेंच रे सेटा हबो से माने सर आउट से ईरान ना इराक रे सेठी भी सर कोसे बैन हिजाब सेठी भी चलची ना सेटा तो अलग कथा सोशल रेवोल्यूशन आउ रिलीजियस टेनेंट भितर डिफरेंस अछि सो इन मेनी इस्लामिक कंट्रीज ओके तांकर सेठी दिस इज नॉट वन ऑफ द important or religious essentials ठीक अछि एटा सुप्रीम कोर्ट तांकर एनालिसिस रे कहले ठीक सर अछि ए सब पॉइंट सब एडा तो माने विवादित तो एडा सब एटलीस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ सेकुलरिज्म आसी परिबो ए क्वेश्चन रा ना आंसर ना तो हे एटा परिबो विवादित किछि नो इस्लाम रो बेसिक टेनेंट्स भितरे जेमते कि तांकर हज अछि ओके तांकर डोनेशन पई अछि आपन को जति कि इनकम करचली ता जरु धर्म पई किछि डोनेशन आपन करबे जो माने ये करि पाउनांती तांकर कैपेबिलिटी नाही सेही सबु तांकर ओके देयर आर सर्टेन एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम सेथरे एटा आसुनी ठीक अछि सेथरे एटा आसुनी सेठी गोटे कमेंट करथिले भी कोर्ट कि नमाज जदि आसुनी आपनकर एसेंशियल कंपोनेंट तले एटा केमती आसीबो ओके तो एही सब जिनस जतले लेखुचंती एग्जैक्टली टेक्निकल पॉइंट जदि आपण लिखिबे ताले गो विथ द फैक्ट्स जदि जानिचंती टेक्निकल पॉइंट्स लिखिबे निज ओपिनियन एटी लिखि पकेबे ठीक अछि कि आपण कोन भाबुचंती होबा कथा कि कोन राइट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज एनालाइज्ड इफ यू नो दैट इन डिटेल गो इनटू दैट otherwise broad statements किछि देबेन ओके एनी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स रे ब्रॉड स्टेटमेंट्स केबे भी देबेन जहां कोर्ट कहिचंती सेही गुडा ही लिखिबे दैट इज द बेस्ट थिंग ठीक अछि यस सर ओके एनीवन एल्स जे कि केते किछि एतरे ऐड करिवे let us come to our second question very direct question elephantine size of our constitution our constitution सबुठु नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस भितरे सबुठु बड़ ओके किंतु वर्ल्ड रो सबुठु बड़ कॉन्स्टिट्यूशन हैला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ अलाबामा ओके यूएस रो जो 50 टा स्टेट अछि ता भितरु गोटे स्टेट हैला स्टेट ऑफ अलाबामा ता कॉन्स्टिट्यूशन ता दुनिया रो सबुठु बड़ कॉन्स्टिट्यूशन किंतु कथाटा हैला सेटा गोटे स्टेट रो कॉन्स्टिट्यूशन गोटे प्रोविंस रो कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल लेवल रे देखिले आम कॉन्स्टिट्यूशन ता सबुठु बड़ तो से पचारछि कोन तार माने कौन तार रीजंस पई ओके एलिफेंटाइन साइज बाय रीजंस कौन ओके सो टेल मी कौन कौन रीजंस आर होई परिबो गोटे तो हैला इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ठीक अछि you know what is the mother source of your constitution that is the government of india act 1935 आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन रो पाखापाखि 70 भाग 70% ओके सेउठु अपन निचुंदी तो इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 itself is a very bulky or a big okay statute सेटा बहुत बड़ statute ता तो सेटा हला नंबर 1 तो जेतु सेउठु ही अपन नेले 70% तो ऑटोमेटिक अपन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ होला सेटा नंबर 1 सेकंड हला यू हैव ए इंटीग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन यूएस रे कोन तांको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रे हार्डली 7 टा कि 11 टा कोन तांकर आर्टिकल्स अछि काई कि ना तांकर स्टेट पई 50 टा स्टेट रो 50 टा कॉन्स्टिट्यूशन तो स्टेट लॉ गुडी का जोड़ा
सेगुड़ा तक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन रे रहला ओके सेगुड़ा आपनकर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रे तक रहला ठीक अछि सो हमर एठी कोन इंटीग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर रो जत्ते प्रोविजन स्टेट रो जत्ते प्रोविजंस ओके प्लस आउ भी कहीं की बढ़िला नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि हमें देखिबा बहुत गुडे यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशंस अपन देखिबे दे आर बेसिकली प्रोसीजर ओके और दे मे बी मेनली सब्सटैंटिव माने खाली इंपोर्टेंट जिंस ओडा सेतरे देछि दे हैव गिवन जस्ट राइट्स ओके राइट्स कोन रहला तो सेगुडा सेतरे दियाइछ आमो कॉन्स्टिट्यूशन रे सब्सटैंटिव प्लस प्रोसीजरल माने एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ओडा भी दियाइछ ओके जने सीएजी अपॉइंट हेबे तो सीएजी कर एलिजिबिलिटी कौन रहइबो कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखि दिस तो कहीं की कॉन्स्टिट्यूशन लिखि दिछि कहना काले जदि आगु को जाई कोनोसी गवर्नमेंट सेटा किछि चेंज करिया पे चेष्टा करिवे ताले टिके स्ट्रांग मेकानिज्म रखा जो वॉचडॉग्स जो माने रहिले सेमानकर इंटीग्रिटी आउ ताको इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करिया पे किछिटा जिंस कराइछ ओके सो ओवरऑल ए सब जिंस जोगु साइज टा बढ़ी गला दैट इज अनदर रीजन आउ कोन रीजंस रहला कंपोजिशन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे स्पेशली ड्राफ्टिंग कमिटी रे मैक्सिमम लोक जो रहले इधर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स थिले किंबा सेमानको लीगल नॉलेज थिला तेनु आपनको कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो लैंग्वेज टा टिके लीगली हेवी ओके ओटे कॉमन लोक आपण खाली बेयर एक्ट पढ़ी देले आपण बुझी परिबेनी कॉन्स्टिट्यूशन एते जोटा कि यूरोपियन यूनियन रो हैला कि अलगा कॉन्स्टिट्यूशंस आपण पढ़िले इजीली बुझी परिबे ओके सो लॉट ऑफ लॉयर्स और people related to law were there okay so it became a very the language was very technical and they added all the details legal details सब उतरे ऐड कर देल तावरी बढ़ला ओके आउ कोन रीजन थिला वेरियस सोर्सेस रु हमें नेलु तो गोटे तो हैला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 70% सेटु आसी गला बाकी 60 टा खंडे कॉन्स्टिट्यूशंस आपण ओके एनालाइज कला ड्राफ्टिंग कमिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तापरे तांकर भलो भलो गुण जोड़ा अछि ओके थिंग्स व्हिच आर व्हिच वी यू नो ताको इनवाइट करिवार अछि हमकु तो सेगुडा हमें सब देखि कि नेलु सो सेटा भी गोटे बड़ कारण एटी जेम देछि ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स सो वैरिड ज्योग्राफी ओके डिफरेंट टाइप रो क्लाइमेट डिफरेंट टाइप रो खाइबा कल्चर पिंदिबा एस्पिरेशंस तो सब गुडा को माइंड रे रखी काम कला को कॉन्स्टिट्यूशन बड़ गला ओके देन द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज इंडिपेंडेंट बॉडीज से गुडा भी सेठी रहिले ओके टेक्निकल डिटेल्स इन द शेड्यूल्स एंड ऑल ताकू भी अपन रखले सेठी सो ओवरऑल दैट इज दीज आर द रीजंस व्हाई ओके हमारा साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़ी गला राइट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हिस्टोरिकल फैक्टर्स सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन dominance of legal luminaries जो हम डिस्कस कलु it has been drawn from various sources ठीक अछि ए पांचटा छोड़ा आउ कोन पॉइंट्स यू कैन से सर आउ गोटा हम ऐड कर परिबा due to the change in circumstances of day to day life of with the passage of time so the different scenarios can have led to the different amendments over the period of time so that yes, also amendments yes sir तो हमर जो पार्टली फ्लेक्सिबल पार्टली रिजिड हमर ओके बहुत गुडे अमेंडमेंट्स आ भीतर हेची एज कंपेयर टू इफ यू कंपेयर अदर कंट्रीज अमेरिका कोई कंपेयर कर दियंतु ओके सो जदि हमें कंपेयर करबा हमर अमेंडमेंट सेठी बहुत हेची that also tells you about the nature of the constitution which is in the sense that some part of the constitution can easily be amended partly flexible partly rigid jota mein coach okay yes that can be added seta bhi good reason okay au kono anything else anyone would like to add apna morning re question pai jauchandi ठीक अछि so you invest some time ठीक अछि किछि टाइम आ ऊपर दियंतु पॉइंट्स उडा निजे टिके प्रिपेयर करंतु बिकॉज एनीवे दीटा मेथड ही परिबो तो सेटा बेस्ट मेथड अपन टिके निजे आडू रिसर्च करले तापरे आसी के डिस्कस करले रात्रे अदरवाइज अपन जदी मॉडल आंसर पे वेट करिवे दैट इज आल्सो फाइन स्पेशली जो माने नुआ स्टार्ट करचोंती सो वंस यू गेट द मॉडल आंसर्स तापर ताकू प्रैक्टिस करते ओके बट टिके जे एक्सपीरियंस अछंती किछटा सारी देचंती कोर्स किंबा से शेड्यूल हिसाब रे अपन पढुचंती ताहेले एन्श्योर दैट आपन को क्वेश्चन सकाळे एटले मिलुची
सेटा आपण प्रिपेयर्ड हेकी रखिबे ओके सो दैट मैक्सिमम आपण पार्टिसिपेट कर परिबे डिस्कशन तापरे नेक्स्ट दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स डू यू एग्री ओके सो एथरे हमरो लेट्स से एटा गोटे 250 वर्ड्स रे लिखिबार अछि सो फर्स्ट हमको या लिखिबार अछि एथरे कि को प्रोविजन्स ओके इन शॉर्ट एटी तो बहुत एलाबोरेटली देछि आपण देखंतु इन शॉर्ट आपण डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स उडा मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके फंडामेंटल राइट्स हला डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हला पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हला एगुडा हमें कोट कोट आंचु सो मैक्सिमम 2-3 लाइंस रे मते सारिबार अछि एटा ओके फ्रॉम डिफरेंट ओके सोर्सेस वी हैव बोरोड इट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु भी हमें कम बोरो करछु सेटा भी देखिबार अछि ओके so these are the sources of the constitution ये एते देकी आपण गोटे 2-3 लाइन भितर सारिबे काहे ना क्वेश्चन रो एम्फसिस ता हला इज इट अ बैग ऑफ बोरोइंग ओके डू यू एग्री तो एई पार्ट ता हमरो बेसी इंपोर्टेंट अछि सो ओवरऑल जदी डिस्कशन करिबा although we have you know हमरो कोन प्रथम रु जदी देखिबे our culture has been like that it has been an assimilative culture हमें देखंतु इंडस वैली सिविलाइजेशन टू स्टार्ट करिकी हमरो ब्रिटिश पीरियड पर्यंत एबे पर्यंत जेते हमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट रे आसीचु सबुरो भलो भलो गुण इंपोर्टेंट गुण हमें आज भी हम कल्चर रे रखिछु व्हाट वी कॉल कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर ओके बोथ हमरो कंटिन्यूटी भी अछि और चेंज भी अछि जा सोसाइटी को टाइम हिसाब रे चेंज दरकार सेटा भी हमें दोछु ओके कंटिन्यूटी एंड चेंज एग्जांपल किछटा कंटिन्यूटी रा हम देखि परिबे रिचुअलिस्टिक बेदिंग फॉर एग्जांपल मोहिंजोदारो रे आपण ग्रेट बाथ पाइछन ओके आज पर्यंत कुंभ मेला हो कि लोकल फंक्शंस भी हो लोक माने जाईकी गोटे वाटर बॉडी रे से माने ओके रिचुअलिस्टिक बेदिंग करम दिस इज वन एग्जांपल द वर्शिप ऑफ ट्रीज मेनली पीपल एंड अदर ओके से गुडा भी आज पर्यंत चली देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स इन आवर कल्चर बोथ फ्रॉम एंशिएंट इंडिया मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया जोटा हमें एसिमुलेट करछु भलो गुण ओडा हमें एसिमुलेट करछु तो एग्जैक्टली सेही वे रे हमें 60 खंडे कॉन्स्टिट्यूशंस देखिलु दुनिया रो ता भितरु जोटा इंपोर्टेंट सेटा हमें ओके हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रे रखिलु बट हमें कॉपी पेस्ट करिनु कि पैचवर्क करनु हमरो एठी रिक्वायरमेंट जा सेही हिसाब रे हमें ताको बदलेलु यू कैन गिव 1-2 एग्जांपल्स ओके फॉर एग्जांपल सबुटु बडो जोटा बेडरॉक ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट इन यूएस हमें सेउटू बिल ऑफ राइट्स रु नेलु तांको फर्स्ट अमेंडमेंट कहला कि स्टेट शैल नॉट एब्रिज द फंडामेंटल ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन ओके हमर एटी फर्स्ट अमेंडमेंट कोन कहला कि नहीं ओके हमर क्वालिफाइड राइट्स एगुडा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अछि एबे रिसेंट न्यूज़ कोन ना पीआईएल पडिछि सुप्रीम कोर्ट रे फर्स्ट अमेंडमेंट रे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ओके चेक करिया पे कोर्ट हैज आल्सो एक्सेप्टेड दैट देखिया से तरे कोन होछि राइट तेणु आम आखि बंद करके सब नहीं आसनु आम आम हिसाब से चेंज कर लेट्स से फॉर एग्जांपल आमर पार्लियामेंट्री सिस्टम वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपण यूके रु नेले राइट तांको इंस्पायर्ड है कि आपण नहीं चंदी तो तांकर सिस्टम कोन तांकर प्राइम मिनिस्टर केवल लोअर हाउस रु हे परिबो हाउस ऑफ कॉमन्स रु हाउस ऑफ लॉर्ड रु हे परिबोनी आमे किंतु सेटा चेंज कलु ओके आमर एठी राज्यसभा रु भी प्राइम मिनिस्टर हे चंदी प्राइम मिनिस्टर लोकसभा रु हे चंदी ओके सो एमती आउरी भी बहुत गुड जिनस अछि जोटा हमें डिफरेंट ओके कंट्रीज रु आनिलु बट निजो हिसाब रे ताको चेंज कर ओके सो लेट अस modified version हाँ इट इज बेसिकली आवर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक आम रिक्वायरमेंट जहाँ अच्छी से हिसाब रे हमें चेंज कर ओके सो द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड नेसेसरी modification in the feature borrowed okay from other constitutions for their suitability to the Indian conditions. At the same time, avoiding their faults. तेणु जोटा गोटे होमोजेनियस सोसाइटी रे काम करिवो हमर एते डाइवर्स सोसाइटी रे काम करिवोनी तो ताको हमें चेंज करछु इट वाज कोडिफिकेशन इफ मेनी एक्जिस्टिंग लॉज एंड वैल्यूज इनटू one document okay so concept of equality fraternity liberty federalism republic democracy etc are all to be found in ancient Indian history and scriptures okay तो ब्रिटिश जंती बाबू दिले से माने व्हाइट मैन्स बर्डन हिसाब रे
से माने हमको सिखे देले सब सिविलाइजेशन एंड ऑल से माने सिविलाइजेशन रे सी जानि नथिले हमर एठी रिपब्लिकन स्टेट्स एग्जिस्ट करथिले ठीक अछि तो हिमालयन फुटहिल्स रे जोडा गणराष्ट्र बोली हम तो कहतलो ओके तो सेगुडा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेतबडू एग्जिस्ट करी आछि तांको पे नुआ हिते पारे ओके बट not for the Indians, right? It was never a blind borrowing, it was innovative borrowing. So এই যে গোটে গোটে ফ্রেজ ଅଛି এইটা আমি ଆମ एग्जाम ଆମର ଖାତାରେ ଲେଖିବାର ଅଛି so blind borrowing ନୁହ innovative borrowing, you borrow and then you innovate according to your own requirement ठीक ଅଛି fifth रे कहला when western modernity began to interact with local cultural systems something like a hybrid culture began to emerge possibly by creative adaptation. Thus, when we were drafting a constitution, efforts were made to amalgate Western and traditional Indian values. It was a process of selective adaptation and not borrowing. Okay, तो ताको borrowing न कहि कि हमें innovative borrowing कहि परछु कि selective adaptation कहिबो. Its result of strong brainstorming तो केति कि दिन हमको नैतिला. Okay, so many studies were studies many different constitutions of various countries okay but did not copy paste they improvised each and every means okay any article amaro circumstance हिसाब रे हमें चेंज करछु तो से सेम जिंसोटा ही हमें okay different points रे repeat होछु our constitution has indeed taken references from existing constitutions of the world but it has not borrowed the constitution as it exists. For example, US constitution envisages Bill of Rights, where our constitution envisages rights as well fundamental duties of all citizens of India. कितने गुड़े देश सर fundamental duties are तो सर fundamental duties तो सर USSR रो असले ना कोन हाँ तांकर बहुत गुड़े देश सर fundamental duties are Soviet Russia रो ओके असला fundamental duties are obligatory किंतु आमे एठी सेमती कलुनी ओके बहुत जगह रे penal provisions भी अछि like conscription अछि बहुत गुड़े देश रे तो आपण जा भी हेले 2 वर्ष कि 3 वर्ष आर्मी रे आपण काम करिया पड़िबो आपण निजर फंडामेंटल ड्यूटीज जदि करू नांती कि ड्यूटीज ओके फॉर द सिटीजंस जदि करू नांती यू विल बी पेनलाइज आपण को अगेंस्ट रे penal provisions अछि ओके पेनल्टी दियाबो आपण को पनिशमेंट दियाबो इंडिया रे सेमती किछि नै okay it is expected that citizens will follow fundamental rights jodi not be follow korchandi tale kichi nahi okay just because you violate a fundamental right apno ko against re konosi action habo ha seita oda alga jinso apno ko auchi you should respect the national flag you should respect the national anthem okay apno jodi national anthem ko disrespect kale ta pai statutes achi alga ठीक अछि तो सेथरे आपण परसिक्यूटेड हेबे बट नॉट बिकॉज़ तो सर एग्जांपल रे सर हमें जदी मूवी हॉल रे जो छोड़ा सेटा कंपलसरी उठे जाला सेटा भी देई परिबा सेटा एठी काई कि देबे एठी से कोन पचो माने सर एटा इंडिया रे एते रिजिडली फॉलो होएनी सेठी यूएस रे होजी एंड कोइ परिया यूएस नहीं यूएसएसआर इन मेनी कंट्रीज इट इज मैंडेटरी ओके सेठी तो आमे एतिकी लिखि परिबा कि आमे सेटा वॉलंटरी कलु आमे ताको यू नो वी हैव नॉट मेड इट ऑब्लिगेटरी ओके सर वॉलंटरी एक्शन लखिनु सेतरे ठीक अछि तो सेमती आमे आम रिक्वायरमेंट हिसाब रे ताको चेंज कर राइट we have also taken a strong reference from British constitution to constitute a sovereign parliamentary system in India so it is very important difference tankara seti parliament is okay complete sovereignty of parliament amaro eti constitutional supremacy Indian parliament is not okay completely sovereign right so although sei form ta ame neithilu Britain ru kintu tankara okay jemti pura parliamentary sovereignty achi ame seita rakhilu right however there is no supreme king or queen in India and our president is head of state okay so that is a amara written constitution tankara unwritten constitution okay tankara that is a okay head of the state the monarchy seta amara kintu republic hela so semti lot of things according to our requirement ame change korichu we joined the commonwealth but unlike Australia New Zealand and other commonwealth countries we don't accept the queen of England okay or king of England javi as our head of the state semane koruchendi kintu
बुझिपारे तेणु आमे आम रिक्वायरमेंट हिसाब रे चेंज करिछु so it would not be prudent in calling or in terming okay our constitution as a patchwork or bag of borrowing. Pushpale, any other points you would like to add? Sir, Kuhନ୍ତୁ. sir, I have one doubt, sir. Kuhନ୍ତୁ. Sir, B.R. Ambedkar said that we have the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitutions of the world. Yes. Sir, एटा means ମୁଁ आ ପାଇଁ आंसर टा गोटे सेपरेट वे रे लिखि सर सेति ପାଇଁ गोटे डाउट आस्तिला means What means you mean ମୁଁ by ransacking? Robber comes and ransacks okay a house. माने से बहुत भल रे देखि रे सब बने एपट सेपट करिकी सब पूरा खोजी देला भल रे ठीक अछि ताकू जो जिंसटा इंपोर्टेंट लागिला जे तो आसीबो भाई मु पूरा घरटा उठे कि नेबी ओके ताको रैंसैक करे दरकार नहीं से तो सब जिंस नहीं जीवो सीए डिस्क्रिमिनेट करूची मो पई वैल्यूएबल कोटा मो पई वैल्यूएबल कोटा नो से पैसे रैंसैक कला तापरे देखिला एटा बेसी इंपोर्टेंट आकु नहीं गली ज्वेलरी नहीं गली पैसा नहीं गली कि ताकू जहां इंपोर्टेंट सेटा नहीं गला ओके बाबा साहेब अंबेडकर भी से कथा कहउछंती कि आमे 60 ऑड कंट्रीज रो ओके कॉन्स्टिट्यूशन को रैंसैक कर दो देखि देलु ता भितरु भलो जिंस जोडा सेगुडा आमे आनचु आमको जहाँ देखा गला तांकर प्रॉब्लम्स सेटा चेष्टा करछु से प्रॉब्लम गुडा आम कॉन्स्टिट्यूशन एमति न आसी गॉट इट से को स्पिरिट रे देखो कहछन तो सर एठी रैंसैकिंग बदल रे आंसर रे ब्रेनस्टॉर्मिंग लिखा है तो सेटा इक्वल मो मतरे हां वी हैव डिस्कस्ड इट थ्रेडवेयर ओके गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत गुडे कॉन्स्टिट्यूशंस को हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिस्कस करलु तापरे हमको जोड़ा लागिला हो एटा आम देश पई आम सिचुएशन पई आम सोसाइटी पई ओके इंपोर्टेंट रहिबो ताकू हमें नेलु ठीक अछि आउ जोठी हमको लागिला कि हमको आम देश रो कंडीशन पई ताकू मॉडिफाई करया पड़ियो करछु सेटा गॉट इट okay let us go to the next question. India has an independent and integrated judiciary. Discuss. Okay. Independent or integrated judiciary. So tell me, first let us go to independent judiciary. Okay. So independent judiciary ऊपर हमें कौन लिखिबा? So judiciary in India, okay, is completely separated from the executive and legislative interference. तो सेथरे हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रो कोन प्रोविजंस अछि ओके ता ऊपर टिके हमें we can write okay so सेटा हला important that part we have to go through right that is independent judiciary सेठी हमें आ गोटे पॉइंट भी दे परिबे जेबे जेबे भी आपणकर एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर चेष्टा करिछि ए इंडिपेंडेंस को भांगिबा पई कोर्ट्स हैव टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर एग्जांपल एनजेसी एक्ट को ओके अनकॉन्स्टिट्यूशनल null and void ultra virus okay सुप्रीम कोर्ट कर रिसेंटली कॉलेजियम ऊपर क्वेश्चन डिबेट चलछि सब हां दैट इज अनदर थिंग फॉर एग्जांपल आमे जेंति कहूछु डेमोक्रेसी तो सबटु बेस्ट फॉर्म नुह किंतु जेतिके एस्टैब्लिश्ड फॉर्म अछि ता भितर सबटु ठीक ठाक चलछि जेटा डेमोक्रेसी ता आमे जेंति पॉपुलर डेमोक्रेसी रखछु ठीक सेमति ओके बिकॉज़ we do not have we cannot have the concept of a committed judiciary okay जोटा केते गुडे देश रे अछि हमर एठी सबले जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहइबो तेनु तार इंडिपेंडेंस पई कॉन्स्टिट्यूशन रे भी प्रोविजंस अछि ओके दोस थिंग्स वी कैन राइट प्लस क्वेश्चन टा कोन बुझंतु ओके इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी ठीक अछि सेटा से मेनली कहूछ सो
दीटा वे रे तक माने दीटा पार्ट रे आपण आंसर देबे फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एक्सक्यूज मी सर सर हम आंसर राइटिंग बेले तो एमती तो अंडर माने दीटा लेखि मझिरे एमती गार टाणी लिखि परियन मते दीटा एटा एक्चुअली स्कूल लेवल ले होउछ कोडा एमती सर वे रे माने एक्चुअली कलम करी लिखिया एटा हमर जो ऑप्शनल करी करे अलगा वे रे लेखाबो किंतु 10 मार्कर पई ठीक ही अछि जदि आपण आरो वेटा हला सर एमती लिखे चलिबो आपण हां एबे आपण लिखि परिबे जेतु यूपीएससी पैटर्न रे आपण लिखिबे आउ गोटे मेथड हला जोटा कि ऑप्शनल से हमें देखु जोतरे सपोज जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस ता रहिला सेही पॉइंट ऑफ डिफरेंस रे एटी एक्चुअली डिफरेंशिएट कहिनी सेटा जंती ताको हमें प्रेजेंट कलु सेमती बट क्वेश्चन ता हला इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी डिस्कस ठीक अछि तो एटी डिफरेंशिएट कहिनी जदि डिफरेंशिएट कहितांता ओके हमें ए टाइप रो लिखितांतो आउ जो आरो वेटा आपण कहउचंदी लेट्स से को पॉइंट रे डिफरेंस अछि सेटा हला सब हेडिंग फर्स्ट लाइन की फर्स्ट पैराग्राफ आपण गोटे साइड रो लिखिबे नेक्स्ट पैराग्राफ आरो साइड ता लिखिबे दैट इज अनदर पैटर्न इन व्हिच यू कैन राइट द डिफरेंस क्वेश्चंस बट 10 मार्कर्स रे ओके किंबा 20 मार्कर्स जदि आसुची ताले दिस पैटर्न इज फाइन एतरे किछि प्रॉब्लम नै ओके सर सर एटा 10 मार्कर क्वेश्चन सर एटा 10 मार्कर सर कोडा एटा हां हमर दीटा टाइप रो माने रहउची आपन ना गोटे 10 ना गोटे 20 ठीक अछि ओके सर सर नेक्स्ट ईयर सेटा टोटल मार्क्स 250 हे जियो ना सर हां तारे पूरा 10 एंड यूपीएससी पैटर्न रे आसी जिवो आपन यस सर okay so independence of judiciary what is independent judiciary say points uda apanଙ୍କର ଲେଖିବାର ଅଛି neither the legislature nor executive can intrude into its domain okay so that is very important judicial independence ta okay to ensure constitutional supremacy okay so this is very important कि supreme court through judicial review जदि से इंडिपेंडेंट न होई कि रहला ताले यू नो कॉन्स्टिट्यूशन ता प्रॉपर्ली मे बी से इंटरप्रेट करिवेनी ऑलरेडी किछिटा प्रॉब्लम्स हमें देखि सारलुनी कोन प्रॉब्लम्स देखिलुनी दी तीनटा केस आमजरे हिच गोटे हला कि जजेस माने इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तांकर रिटायरमेंट पर इमीडिएटली तांको अलगा किछि असाइनमेंट्स दिया होछ ओके सो फॉर एग्जांपल जने चीफ जस्टिस थिले जे कि बहुत गुडे इंपोर्टेंट जजमेंट देले ओके वन ऑफ द बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम थिला हम देश रे तार जजमेंट देला परे सेंट्रल गवर्नमेंट तांको राज्यसभा रे नॉमिनेट कले ठीक अछि आगुरु भी एमती बहुत एग्जांपल्स होईची जोठी कि तांको गवर्नर्स भी बना हिची स्टेट रो ओके जस्ट आफ्टर फिनिशिंग देयर ओके टर्म ठीक अछि इनफैक्ट देयर हैव बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जे की प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं चल राइट सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस ऑन ओके द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी कि किछड़े क्विड प्रो को तो होनी बट this number of such judges or number of such instances is very very less ठीक अछि तेणु जो एबे कहउतले कि डिबेट होची आ ऊपर कि यू नो आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट तांको किछि असाइनमेंट्स नबा कथा कि नाही स्पेशली गवर्नमेंट रो ओके सो दैट देयर इज अ चांस ऑफ ए क्विड प्रो को आपण इन इंग्लिश रे कहबे ना यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर से टाइप रो जिंस आपण गवर्नमेंट पई किछि फेवरेबल वर्डिक्ट दियंतु तापरे गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट आपण को ठीक अछि से तार किछि व्यवस्था कर दो वी आर सीइंग सम ऑफ द ओके एग्जांपल्स नाउ तो सेटा भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ओके दैट इज अ थ्रेट ठीक अछि सो तापरे तो सर एटा क्रिटिसिज्म रे जीवो कोडा ना ना एटा क्रिटिसिज्म रे क्विड जाउनी प्रो क्रो आपण कहले स्क्रैच योर ब्रेक जोड़ा हाँ माने आउरी कोन चेंजेस हमर दरकार इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हमें एमती तो कहि परिबानी कि जुडिशियरी पूरा ट्रांसपेरेंट वे रे काम करछि ओके से कॉलेजियम सिस्टम रे भी बहुत ओपेसिटी अछि ठीक अछि केमिति जण को आपण एलिवेट करछथि गोटे एडवोकेट को आ गोटे एडवोकेट को एलिवेट करूनांती
ठीक अछि वी डोंट नो वी डोंट हैव रूल्स ठीक अछि जेंति कि एठी आपण परीक्षा दउचंदी रूल्स आर क्लियर एतिकी परसेंट रखले आपण खाता देखा हबो व्हाटएवर जे अधिक मार्क रखला से पाइबो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वी डोंट नो किछो मार्किंग सिस्टम अछि कि एडवोकेट्स मानकर ओके गोटे दीटा एका संगे दीटा एडवोकेट अछंती सेम एज रो सेम स्टैट्यूर रो सेम सक्सेस लेवल रो सेम इनकम रो जणे एलिवेट होचंती हाई कोर्ट जज हे जाउचंती आउ जणे हेई पारु नांती को कारण पई सेटा ठीक अछि सो सर वी एटा डोंट नो सीनियरिटी बेसिस रे तांकर कहउछन ना कोन ना ना सीनियरिटी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केस रे आसीबो ओके सेटाले सीनियरिटी आसीबो आउ तांकर गोटे जनरल रूस्टर मेंटेन हुए हाई कोर्ट जजेस कर ओके सेउतुर से माने सुप्रीम कोर्ट को जिबे दैट इज अ डिफरेंट मैटर किंतु हाई कोर्ट को केमति जिबे ठीक अछि गोटे एडवोकेट बार रु से हाई कोर्ट को केमति जिबो केते जण सीधा जो माने आपनकर डिस्ट्रिक्ट जज रु सीधा हाई कोर्ट को जाउचंती आउ प्राय तो ताकर समस्त मोनोपोली अछि एथरे तो एग्जैक्टली जजेस सिलेक्टिंग जजेस एबे लास्ट मंथ ही किरण रिजिजू जी हमर लॉ मिनिस्टर से कथाटा कहले कि गवर्नमेंट को ते पावरटा मिलिबा कथा बहुत गुड़े देश रे अछि कि आमे चूज करिवु ओके किए जज हबा कथा राइट अल्टीमेटली सी चूज करंतिनी किंतु सी एक्सेप्ट करिवे ठीक अछि देयर आर मेनी एग्जांपल्स जोटी की कॉलेजियम रेकमेंड कर दउची ना किंतु गवर्नमेंट से ना को ड्यू टू वेरियस रीजंस से ताकू आउ मानुनी गोटे बेस्ट एग्जांपल अपन नहीं परिवे इन दिल्ली हाई कोर्ट देयर इज अ वेरी सीनियर एडवोकेट जहां को ना बहुत थर ओके रेकमेंड हेलानी जज हबा पई गवर्नमेंट के कॉलेजियम रेकमेंड करूची किंतु गवर्नमेंट सेटा एक्सेप्ट करूनी ओके काहे के एक्सेप्ट करूनी काहे के ना से he is openly तांकर sexual orientation टा okay से हला basically he has openly said that he is gay तांकर sexual orientation टा gay okay so because of his sexual preferences तांकर बहुत ही बढ़िया तांकर practice अछि and other things आउ collegium recommend करछि तांकर नाम more than once but government accept करू बुझले तो गवर्नमेंट ऑल्दो गवर्नमेंट कहूनी गवर्नमेंट डिसाइड करूनी किए जज हे जिवो किंतु गवर्नमेंट फाइनली मानिबार अछि गवर्नमेंट चाहिले गोटे जज को जज जहां का ना रेकमेंड हे कि अछि ताको होल्ड करके रखियो किछि एक्शन ही न बनी ता ऊपर यू हैव द फेमस एग्जांपल ऑफ जस्टिस ओके हमर मने पड़नी जस्टिस थॉमस ना जस्टिस जोसेफ से तांकर भी सेमती सुप्रीम कोर्ट रे सेम जिंस होला ए करेंट गवर्नमेंट से टोटल ताको करे देलन ओके काहे ना से आगुरु ए 356 को रिलेटेड करी की से गवर्नमेंट अगेंस्ट रे किछटा वर्डिक्ट देथिले राइट एटा ए गवर्नमेंट करछि बोली नो इंदिरा गांधी को टाइम रो कि तांका आगो टाइम रो भी ए जिंसटा हे होछि सो सेटा भी गोटे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आउ कोन रहइबो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी अंडर रे ओके सो कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन कोन सर मेजर्स अछि जुडिशियल इंडिपेंडेंस पाई दैट यू कैन राइट okay fixed tenure and all these are charged to the consolidated fund of India okay so jara सब charge expenditure आपनकर जाउछ राइट सो तापरे आउ केतेटा चेंजेस से कोछि देखन रेडी prohibition and discussion of conduct of judges in legislature so you can discuss a judgment let's say ram bhumi janmabhumi judgment ta as a student of law बहुत जण तो criticize कर परन okay but you cannot criticize the judge personally ban on practice after retirement so अपन जदि जज अछंती गोटे हाई कोर्ट रो अपन को रिटायरमेंट तो करे ताले से माने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट भी कर पारिए कोनटा जदि हमें क्रिटिसाइज करिया ओपनली जज को जजमेंट को कले किछि असुविधा नहीं किंतु कोर्ट को कि जज को जदि मोटिव sir. अपन देबे कि ये एथि पई कर दै जंदी ठीक अछि तो सेटा असुविधा हो ओके बट आपण गोटे तांकर एनालाइज करचंदी तांकर जजमेंट टाकू फेयरली एनालाइज करचंदी एज ए न्यूज रिपोर्टर एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ सेथरे किछि प्रॉब्लम नहीं ओके पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन सो एवडा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अछि एंड अनदर इंपोर्टेंट थिंग इज ए जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एटा गोटे फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ कमिंग टू इंटीग्रेटेड जुडिशियरी एटी कोन यूएस रे सेपरेट जुडिशियरी तांकर 50 टा स्टेट रो 50 टा कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन
हिसाब रे तांको लॉज तांकर स्टेट रो जुडिशियरी अलगा तांकर फेडरल जुडिशियरी अलगा so every state has its own supreme court every and circuit courts ଆଉ फेडरल कोर्ट्स भी थाए ठीक अछि तेणु फेडरल सब्जेक्ट्स ऊपर जेतोरा केस हबो से गुडा फेडरल कोर्ट्स रे हबो तो तांकर दीटा सेपरेट टाइप रो ओके जुडिशियल सिस्टम बट हमर एटी गोटिए कॉन्स्टिट्यूशन जेतु इंटीग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर पे भी सेही कॉन्स्टिट्यूशन तो हमर इट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियरी at the highest level is the supreme court तापर हाई कोर्ट्स आसी गले तापर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसी गले तापर सबऑर्डिनेट कोर्ट आसी okay so integrated judiciary refers to integrated structure of Indian judiciary with supreme court at top this ensures a single system of courts enforcing both central as well as state laws in US we have a double system of courts wherein federal courts enforce federal laws and state judiciary enforces state laws तांकर जेतु okay अलगा व्यवस्था अछि different constitutions for different states okay तांकर law भी अलगा for example you see in many states of US capital punishment is banned तांकर capital punishment abolish such नाही तांकर capital punishment किंतु किछिटा स्टेट रे अछि some states are very notorious तांकर बहुत गुडे लोकन से okay मारुचंदी सब वर्ष ठीक अछि so constitution ensures integrated judiciary by placing supreme court at top high court subordinate courts and district courts below it okay olte richi high court pore district court tapare subordinate court बुझल tapare ei ju integrated judiciary it is a unitary feature of the constitution independent judiciary it is a federal feature of the constitution okay so these are some of the points out kon point apna add kar paribe this is not a differentiate question eta emti deichi but question is India has an independent and integrated judiciary discuss okay anyone else de ki au kichi point add kari paribe jota ame discuss karnu eti next you come to question number 5 এটা পুরা direct question salient features of parliamentary form of government so directly we can okay nominal and real executive तो आपनकर गोटे de facto de jure executive अछंती nominal executive जेमति कि हम प्रेसिडेंट हेले head of the state titular head rubber stamp etc ज्यादा को real executive your prime minister at the central level chief minister at the state level actual power तो तांको पाखे था okay so dual executive nominal और real executive तापर double membership आपन जो मंत्री माने अछंती ministers they are members of the cabinet or you can say they are ministers as well as that means political executive ro भी semane part plus they are also members of the parliament okay legislature ro भी semane part state level ro भी se so that is double membership third है collective responsibility so there is a collective responsibility central level re to the Lok Sabha or state level re to the Vidhan Sabha okay lower house को that is collective responsibility तापर secrecy of procedure okay तो आपनकर कैबिनेट प्रोसीडिंग्स करी करे कि कौन सब डिस्कशन हैला सेटा एमती नै कि आपण बाहर आसी ताको कहिबे कि ताको कोडी आपण ताको लीक करिवे ओके so that is secrecy of procedure then leadership of the prime minister or let's say the chief minister in case of states okay so he is the leader of the house or the government not the house the government ठीक है गवर्नमेंट रो से लीडर बोली आपण कहते ओके तापरे नेक्स्ट हैला मेजॉरिटी पार्टी रूल खाली पार्टी नो इट मे बी कोएलिशन आल्सो ओके मेजॉरिटी पार्टी और मेजॉरिटी कोएलिशन रो रूल एतरे रहइबो जो पार्टी किंबा ग्रुप ऑफ पार्टीज ओके से माने मोर देन 50% ऑफ सीट्स ऑक्युपाई करले तो से माने दे विल रूल सो दैट इज मेजॉरिटी पार्टी रूल नेक्स्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर मींस बीटा हाउस अछि आपनकर पॉलिटिकल होमोजेनिटी ओके सो जे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रे जो माने अछंती से माने दे हैव टू ओके हैव ए कॉमन एजेंडा तांकर पर्सनल व्यूज अलगा हे पारे बट गवर्नमेंट पे जे तरह से काम करछन दे रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट सेठी पॉलिटिकल होमोजेनिटी रहइबो ओके माने पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस आइडियोलॉजी
has to match ए जो coalition government रे टिके सेटा हबा कष्ट काहे ना different political parties different तांकर agendas भी थाई पारे से माने किंतु coalition रे आछंदी so they would have a common minimum program okay से common minimum program हिसाब रे से माने चलिबे right for example एबे देखंतु प्रथम जेतले एनडीए नेशनल आपनकर डेमोक्रेटिक अलायंस इनिशियली जेतले तांकर गवर्नमेंट थिला वाजपेयी को टाइम रे सेतबेले ये टीएमसी करी कभी ओके ममता बनर्जी एंड ऑल दे वर आल्सो पार्ट ऑफ दैट प्लस तापर से माने भांगी की गले पुनी अलगा पार्टीज लेट्स से जनता दल यूनाइटेड ओके से माने भी से कले से माने मझे छाड़ देले पुनी आसले पुनी छाड़ देले राइट व्हाटएवर बी द केस इफ देयर इज ओके नो वन पार्टी रूल एबे तो हमरो वन पार्टी मेजॉरिटी अछि सेंटर पे दैट इज बीजेपी रो एका मेजॉरिटी अछि सपोज कोएलिशन रे से माने गवर्नमेंट करिबे ताको निजर मेजॉरिटी रहलानी कोएलिशन रे गवर्नमेंट करिया पड़े राइट जहां भी हेले पॉलिसी ऊपर दे हैव टू हैव ए कॉमन ओके दे हैव टू हैव ए कॉमन प्रोग्राम ऑल हैव टू एक्सेप्ट दैट ठीक है इंडिविजुअल पार्टी रो अलगा मत रही पारे फॉर एग्जांपल लेट्स से यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बीजेपी एज ए इंडिविजुअल पार्टी से ताको मैनिफेस्टो रे एटा लिखिछन कि 2024 आगुरु हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड करी ठीक है बट तांकर जो पार्टनर्स माने अछंती से माने समस्त एग्री न करि परंती एनडीए रे तो से माने कहि परन नहीं यू नो हमर एबे दरकार नहीं राइट आउट के कंसेंसस हो आउट के डिस्कशन हो ओके सो व्हाटएवर दे डिसाइड आगुरु से माने गोटे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करथिले से प्रोग्राम हिसाब रे ते माने आगु को बढ़ी ओके दैट इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी so last year कहला the ministers in a coalition government are bound by consensus okay maximum लोग जो डिसाइड कले consensus 100% न होई पारे लेट्स से 10 टा मिनिस्टर अछंती 7 जण कहले गोटे कथा बाकी 3 जण जे अगेंस्ट थिले से माने भी मानिबे राइट तापर हैला नो फिक्स टर्म सो गवर्नमेंट नो टर्म टा फिक्स नो इफ दे लूज द नो कॉन्फिडेंस मोशन ओके ताले गवर्नमेंट आपनकर जाई परियो सो there is no fixed term right so these are some of the important features of parliamentary government okay so igura direct question thila now let us come to some UPSC level question 8 are 2021 the UPSC question constitutional morality is rooted in the constitution itself and is founded on its essential facets okay explain the doctrine of constitutional morality with help of relevant judicial decision constitutional morality okay ethics रे आपण पढुचंती एबे morality कोन तीन चारटा जिंस हमें पढुचे ethics रे ethics कोन moral कोन values कोन ठीक है सो एठी से कहला constitutional morality okay in simple words constitution द spirit जा सेठी जा लिखाइची आमे सेटा को फॉलो करी ठीक अछि दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी राइट बुझी परले सो यू कैन ऐड योर पॉइंट्स लेट अस हैव ए डिस्कशन ऑन दिस यूपीएससी क्वेश्चन छुड़ा सेटा आमे टिके भलो रे ताको डिस्कस करिबा डिफरेंट डायमेंशंस करिका यस एनीवन हु कैन ऐड समथिंग हु कैन स्टार्ट हु कैन इनिशिएट so basically constitutional morality गोटे first line रे से simple definition तारा दे देला it means adherence to the norms of the constitution in a democracy that is constitutional morality okay it is not limited to following the constitutional provisions in their literal sense जहाँ लिखाई से ही करिवे नहीं ता स्पिरिट ता कोन but includes a commitment to an inclusive and democratic political process in which both individual and collective interest of society are satisfied ठीक अछि सो तार किछटा फीचर्स ता मानेटा कोन सेटा हमें कोट ओके it requires a
practical percolation of values like sovereignty, social justice, and equality in the realm of constitutional adjudication. ये जो sovereignty कथा कहूँ, social justice, different downtrodden groups जोड़ा अच्छी, आउ different forms of equality अच्छी. Okay, ये सबू गुड़ा आमे constitutional in the realm of constitutional adjudication. Okay, which version? So this we have to focus on this particular point. Okay, कि खाली literal meaning रे नुह actual ground level रे सेटा हबार अछि, especially equality, social justice and sovereignty. Okay, ये जो term ता constitutional morality, it is not found in Indian constitution, but तारा features कौन. Okay, किंबा the spirit of constitutional morality is there. तारा example चला preamble. Okay, plus fundamental rights, directive principles, fundamental duties, and various checks and balances. Okay, legislature check on executive, judicial review of legislature and executive actions. So these are basically, okay, what you can say are the various facets of constitutional morality under our constitution. ठीक है, से दीटा कही थिला कंपोनेंट आपन क्वेश्चन रे explain the doctrine of constitutional morality, सेटा हमें एबे explain करि सक. Second part of the question थिला with help of relevant judicial decisions. तो एठी आपन को you have to be abreast with, okay, Supreme Court judgments. तो आपन मु कहि थिले जोटा आपन जो भी मैगजीन पढुचंती, ओके, प्रॉपर सिविल सर्विस मैगजीन जदि पढुचंती से उतरो मिलि जिवो, नहले आपन जदि स्पेशलाइज्ड लॉ साइट्स को जिबार अछि ताले बार एंड बेंच को फॉलो कर परिबे. ओके, बार एंड बेंच. ओके, बहुत ही डिटेल्स रे एथरे और बहुत छोटो छोटो जिंसो त कहना एटा बेसिकली इंडिया's बेस्ट लीगल, ओके, अवेयरनेस की न्यूज साइट अपन कहि परिबे. दे हैव गॉट लॉट मेनी यू नो रिसोर्स पर्सन और छोटिया छोटिया न्यूज भी सुप्रीम कोर्ट रो एथरे आसी जाय. हमकु सेगुडा सो दरकार नहीं अनलेस यू आर अ लॉयर और यू नो अपन लॉ रिलेटेड अछंती. ओके, नाउ कम टू द various judgments of Supreme Court. So government of NCT of Delhi versus Union of India. एतरे कौन कहला Supreme Court? All high functionaries need to follow constitutional morality and protect the constitutional values spelled out by Constitution. Constitutional morality acts as check on arbitrary use of power by high functionaries. Okay. So एटी कौन थिला केस टा ना, you know that Lieutenant Governor, okay, आउ जे गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी रो तांकर बहुत टाइम ओके पड़ेनी, राइट. तो सही रीजन रो एटा जाइतिला सुप्रीम कोर्ट को. वेरी वेरी इंपोर्टेंट तापरे, ओके, राइट्स ऑफ द you know the you can say little the people who are with a difference. Okay, Navtej Singh Johar, very important case, and others versus Union of India. So eta कौन थिला article section 377 of the Indian Penal Code, IPC रो 377. ओके, कौन कहूची ना किछिटा सेक्सुअल एक्टिविटीज के से अननेचुरल बोली कहूतला, स्पेशली बिटवीन टू मेन, टू वुमेन एक्सेट्रा. ओके, सो जोटा कि गोटे आपण कहि परिबे पुराना कालिया माइंडसेट को नै कि कराइतला. सो सुप्रीम कोर्ट सेतरे कहले कि इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द, ओके, एलजीबीटी कम्युनिटी, जे लेस्बियन, ओके, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल अछंती. ओके, तो तांकर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होची एतरे. ओके, सो ऑन द बेडरॉक ऑफ प्रिंसिपल्स enunciated in Article 14, 19 and 21 of the Constitution, that is dignity of individuals overall. Okay, तो सेटा को decriminalize कर देले. एबे पुनी नेक्स्ट डिमांड कोन असुची कि लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस. गोटे पुओ को बाहाई परिबो, गोटे झियो को बाहाई परिबो. ठीक अछि. सो सेटा लीगल सैंक्शन जेमती आम देश रे रहबो, जेमती कि लाइक लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ रोची. ओके, सेमती ताको मैरिज सर्टिफिकेट दिया हुआ एंड अदर थिंग्स. तो सेटा बे नुवा डिमांड जोटा रोची. तापर सर रिसेंटली तो सर माने मोनोगामी फॉलो है, माने जोटा निजो को ही बाई माने एमती केस भी अछि.
सेटा केस लॉ नुह सेटा जने मु कहबी मु निजको बाई जेछु ओके ताको सोलोगामी हमें कहूछु ते सोलोगामी रे यू कैन मैरी योरसेल्फ ठीक अछि तार एबे लीगल रिपरकशन कोन बट देन आई एम नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर एनीवन ठीक अछि एबे मु कहबी मु मो लैपटॉप को बाई जीवी मते को लॉ आसे कि मना करियो कि नहीं तुमे हुआनी ठीक अछि मु जदी अनलेस किछि गोटे जाई कि पब्लिक न्यूसेंस करछि कि असुविधा करछि ओके सो तार अलगा प्रॉब्लम रहइबो सपोज इनहेरिटेंस ओके तो किंबा से सब इश्यूज जोड़ा रही पारे कहीं ना फंडामेंटली हमें जदी देखिबा मैरिज रो किछिटा फंडामेंटल गोल्स अछि जेंति हिंदू मैरिज रो तीनटा फंडामेंटल गोल्स अछि वैदिक गोल्स जोड़ा हमें कहूछु धर्म प्रजा और रति ओके ए तीनटा हला हिंदू मैरिज रो अकॉर्डिंग टू द वेदस ओके वैदिक लिटरेचर रे एटा तार मेन एम धर्म कोन राइटियसनेस धर्म इज नॉट रिलीजन ठीक अछि रिलीजियस राइट्स केतेटा रिचुअल्स करिया पई मैरिज दरकार तेणु आपण देखिबे हिंदू रिचुअल्स रे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर रिक्वायर्ड ठीक अछि तो से हला धर्म देन आसिला प्रजा प्रजा इज प्रोजेनी प्रोक्रिएशन निजरा वंश को आउरी बढ़ेबा ओके सो सेटा हला सेकंड आउ थर्ड हला प्रायोरिटी रे रति दैट इज सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन ठीक अछि सो धर्म प्रजा एंड रति ठीक अछि एबे एई जिंस उडा सेम सेक्स मैरिज रे हे परिबो कि नहीं तो कोर्ट से गुडा सब विचार करबे आगु को किंतु एटा हबो निश्चित हबो बिकॉज सेम जिंसटा से कहउची कि तांकर एटा तांको पर्सनल राइट इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इट हैज ऑलरेडी हैपेंड नाज फाउंडेशन केस से कोन द सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड नॉट पब्लिक मोरालिटी शुड प्रिवेल वेरी वेरी इंपोर्टेंट अंडरलाइन करो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शुड प्रिवेल नॉट पब्लिक मोरालिटी लोक मेजॉरिटी कौन भाबुची सेटा इंपोर्टेंट नुह इफ यू रिमेंबर दैट गैंग रेप केस इन हैदराबाद ओके से जो गोटे मेडिकल किंबा गोटे फार्मासिस्ट प्रियंका रहितला दिशा तापरे केस एनकाउंटर हैला ठीक अछि जोटा कि पब्लिक सपोर्ट भी थिला केही विटनेस भी बाहर लेनी तार ठीक अछि सेटा सुप्रीम कोर्ट कहउचंती कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज टू बी फॉलोड नॉट पब्लिक मोरालिटी लोक माने जहा भाबुचंती एटा ठीक कि एटा भूल सेमती ओवरऑल देखिले पब्लिक मोरालिटी तो कहबो कि एलजीबीटी कम्युनिटी को जो राइट्स दउचंती सेटा भूल ठीक अछि सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शुड प्रिवेल नॉट पब्लिक मोरालिटी मे बी बायस्ड ठीक अछि तापरे नेक्स्ट जस्टिस केस पुट्टुस्वामी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स एतरे कोन कुआ गला सुप्रीम कोर्ट upheld the constitutional validity of Aadhaar subject to certain limitations. Constitutional morality ensures court must neutralize the excess of power by the executive and strike down any legislation or even executive action if it is unconstitutional. Okay. So, that is the important part. Okay. Puttuswamy, Justice Puttuswamy versus Union of India. Okay. Next, Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala. This is the Sabrimala case. So, Supreme Court opined that constitutional morality, which includes values like justice, liberty, equality, and fraternity, ought to be preferred over customary values, traditions, and beliefs. Okay. So, constitutional morality has to be preferred over customary values, traditions, and beliefs. Okay. ए जजमेंट रे गोटे ही लेडी जज थिले आउ से लेडी जज ही गोटे ही डिसेंटिंग जजमेंट देथिले ओके इट अलाउज द एंट्री ऑफ वुमेन इनटू सबरीमाला टेंपल irrespective of their ages okay fighting perception stereotypes and prejudice only woman judge actually said that nahi simti haba kotha no we have to okay respect the tradition तो ता ऊपर बहुत गुडे okay सेते बडे डिस्कशन हेतिला right because the nature of the DT is such okay से गोटे the DT is of such nature that तांकर से restriction ता हबा कथा that is what okay the only woman just said ए जो केस रे कोटा आधार केस रे constitutional validity of आधार सेतरे गोटिए ही डिसेंटिंग आपनकर जज थिले ओके जे कि एबे आगु को
नवेम्बर 8 रे हमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेबे ठीक अछि तांकरी गोटे डिसेंडिंग जजमेंट थिला सेते अदरवाइज अदर माने ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ओके upheld the validity of Aadhaar but judicial review जेहेतु अछि आगु को जाइकी सेटा रिव्यू करियो जेमि एबे पीआईएल पडिची सुप्रीम कोर्ट रे फर्स्ट अमेंडमेंट अगेंस्ट रे फर्स्ट अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल आउ कोर्ट भी ताको एक्सेप्ट करछे देखिवा कोन होची सेते ओके नेक्स्ट constitutional morality is critical for constitutional laws to be effective without constitutional morality the operations of constitution tends to become arbitrary erratic and okay capricious ठीक है तो constitutional morality concept टा कोन इन सिंपल वर्ड्स constitution रे जहा लिखा हिची लिटरली भी आउ तार स्पिरिट रे भी ओके सेटा ग्राउंड लेवल रे करिवार अछि ओके आउ we went through some of the case laws okay जो थरे हमें कहि परिबा कि according to various judgments of supreme court ता कोडे summarize कर देले constitutional morality will have precedence over public morality customary values traditions beliefs etc हला एतिकी हमको मन रखियार अछि got it बुझि परले एटा next second एटा भी basic हमर salient features of the constitution this is also UPSC question how far do you think cooperation competition and confrontation tinita C's koila have shaped the nature of Federation of India okay question ta bujhantu तो ये जो cooperation competition और confrontation shape the nature of Federation of India okay that means center state relation cite some recent examples to validate your answer so let us go first तो ये तीनटा आपण को बुझिया पे पड़िबो ओके कोऑपरेशन रो केसेस कंपटीशन रो केसेस और कन्फ्रंटेशन रो केसेस ओके so federalism essentially means both the center and state have the freedom to operate in their allotted sphere of power in coordination with each other so India is a federal system but with more tilt towards a unitary system of government so it is sometimes considered as a quasi federal system quasi mane kono french re quasi means half okay french Partly. language re quasi means half तो हमें quasi legal quasi federal एगुडा कहूछु if you are interested in literature french literature रे जदि आपण interested अछंदी so there is a very famous story तांकर सेपटे local story folk tale okay about you know there is a beautiful bought cathedral okay जोटा कि एबे फायर रे डिस्ट्रॉय हे गला ओके किछि वर्ष आगुरु ताको एबे पुनी आउथरे बना होछ ताको नोट्रेडाम कोहंती ओके से गोटे स्टोरी टे अछि हंचबैक ऑफ नोट्रेडाम ठीक अछि सो तारा अगेन यू कैन जस्ट सर्च ओके ता ऊपर मो बेसी कहबिनी जस्ट यू कैन सर्च व्हाट इज दैट स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स मटेरियल ठीक अछि सो सेतरे गोटे differently abled लोक ओके हंचबैक ऑफ नोट्रेडाम पूजा लोकटा ओके जेंते ओडिया रे मैं कहूछु राइट हंचबैक सो हाउ ही लव्स अ ब्यूटीफुल लेडी और तापई से कोन कोन करूची ओके सो दैट इज हंचबैक ऑफ नोट्रेडाम काई कहली से लोकर ना थिला क्वाजी मोडो ओके क्वाजी मींस हाफ एंड मोडो मींस फॉर्म सो ही वाज हाफ फॉर्म फिजिकल डिफॉर्मिटी थिला तम सो क्वाजी हैला हाफ ओके सो कमिंग बैक The nature of federalism kept changing since independence. There exists cooperation, competition, and confrontation between federal units in India. तो एबे टिके बुझेबा तीनटा केमती कोन काम करछ cooperation in cooperative federalism both center and state okay and state share a horizontal relationship and cooperate in the largest public interest okay तारा example दिया छि केतेटा cooperative federalism has emerged as one of the principles in Indian federalism. Example, center-state cooperation during COVID pandemic and solving migrant crisis shows cooperation between center and state. Niti Ayog ro a gote example dela
establishment of Niti Aayog redefined the relation between center and state. It enables state participation in the formulation and implementation of national policies. जोटा कि planning commission बेले हो नथिला. Acceptance of 14th Finance Commission recommendation, which significantly enhanced devolution of finances from 32 to 42%, shows the cooperation between center and state. आगुरु कौन थिला कि जदि भी फाइनेंस कमिशन रेकमेंड करूची ओके सेंटर किसी राउंड अबाउट वे ताको बाहर करिकी निज पाखरे मैक्सिमम पैसाटा रखियो. ओके cooperation on implementation of various central sector schemes and centrally sponsored schemes. So setere most of the states, okay, they are doing well. Central government को पैसा properly दौची सेtere. Implementation of goods and service tax, where states have given up a significant part of taxation powers, shows the cooperation between center and state. एटा अवश्य टिके sticky wicket रे अछि काहे कि ना ये जो जति कि ताको प्रॉमिस करा हिची स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स जोड़ा थिले से माने टिके एते खुशी नांती काहे कि ना जति गवर्नमेंट तन कहितला जो टाइम बाउंड वे रे कहितला दवा भाई सेटा होनी. ओके जेमति कि ममता बनर्जी सबले से कंप्लेंट ता करछन राइट. तापरे कॉन्स्टिट्यूशन bodies like interstate councils foster cooperation between state. Okay, but तथापि आमर स्टेट और सेंटर भितर प्रॉब्लम्स रहउछ तो एटा गला सेंटर स्टेट भितर. ओके सो statutory bodies like zonal council are established to promote interstate cooperation and coordination. This we are talking about interstate cooperation, state भितर. Okay, it aims to establish a climate of cooperation among states for successful and speedy execution of development projects. So many states like Odisha, Chhattisgarh, Andhra are coordinating and cooperating on issues of nationalism. Okay, so eguda hela cooperative. Tapare next asila competitive. So competition between center and states, okay, that is very healthy. Healthy competition haba kotha. Let's say ebe kon hela last 15 दिन कि मासे भितरे दीटा बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. ओके इंफ्रास्ट्रक्चर आउ अलगा आपनकर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र रु बाहरी की गुजरात को पड़ेला. ठीक अछि. फर्स्ट आपनकर जो सेमीकंडक्टर फॉक्सकॉन रो जोटा सेमीकंडक्टर ओके चिप बनेबे से माने तो सेटा गुजरात को गला जोटा कि ओरिजिनली महाराष्ट्र को जबार थिला. तापरे एबे जोटा ओके तंकर कार्गो प्लेन बने पे जो फैसिलिटी टा इनिशियली महाराष्ट्र रे हबार थिला बट सेटा भी गुजरात रे हला. ठीक अछि. तो सेटा हला कॉम्पिटिटिव. ओके कंपटीशन बिटवीन स्टेट्स. महाराष्ट्र बेसी आपण को बेटर दे पाउची ना गुजरात दे पाउची. ओके सो नेक्स्ट वी कम टू कंपटीशन. So competition between states emerged because states are competing among themselves to attract funds and investment and to get funds from center and incentives from finance commission on the basis of performance of various indicators. The idea of competitive federalism gained significance post the economic reforms of 1991. Okay. So examples though the state competitive federalism ro Niti Aayog has played an important role. It has ranking states on various socio-economic parameters like health index, progressive India report, school education quality index, and different other indicators say use koruchi. Ease of doing business ta bitaru. So Swachh Bharat ranking systems, etc. Investment summits, सब स्टेट इन्वेस्टमेंट सबमिट करंती. से एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो कि नहीं बट कमिटमेंट बहुत आसी जाए एति 1000 कोटी टंका हमें इन्वेस्ट करी व्हाटएवर. जो स्टेट प्रॉपर फैसिलिटी दे परला समस्त सेठी की जिबे. ओके तो हमें एमती जदी कहबा सब दिन से गुजरात को पड़ोची काहे कि ना प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सब गुजरात रो दैट माइट नॉट बी ए फेयर एनालिसिस. ठीक अछि. इन्वेस्टर्स माने इंटरेस्टेड इन गुजरात बिकॉज़ सेमान जानचंदी सेठी किछि ट्रेड यूनियनिज्म आउ ए जो हमर लेफ्टिस्ट प्रॉब्लम एगुडा सब नाही. ओके आपण जिबे गोटे बहुत पैसा इन्वेस्ट करिवे आपण को लैंड मिलु नथिबो
right? For that, many states have lost big ticket projects. Ame, for example, we lost. Okay. पोस्को Hmm. ଆଉ ତାପରେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପୋସ୍କୋ ପରେ ଆହୁରି ବି କେତେଟା ବଡ ବଡ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କରିବା କଥା ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ ସେମାନେ ହଁ ସେମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି, ରାଇଟ୍? ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ୟୁ ସ ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଟାଟା ନ୍ୟାନୋ। ଓକେ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗୁର ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପଡ ହେଇକି ପଡିଛି। ଓକେ, whereas ସାନନ୍ଦ ଇନ୍ ଗୁଜରାଟ ଯୋଉଠିକି ଟାଟା ନ୍ୟାନୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ମୁଭ୍ କଲା, ସେଠି ତ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ସ ଆସିଗଲାଣି ବଡ ବଡ ଏମଏନସିଜ ର, ପ୍ଲସ୍ ତାର ପେରିଫେରିଆଲ ଓକେ ଆଉ ଆନ୍ସିଲରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଗୁଡା ବି ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓକେ କରେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଟ୍ କଣ ଅଛି ସାନନ୍ଦରେ, ରାଇଟ୍? ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେତେ ଡେଭଲପ କରିଯାଇଛି ସେ ଜାଗାଟା, ରାଇଟ୍? ସୋ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଫେଡeralism, right? To resolve the regional imbalance and inequalities between states, competitive federalism has become an efficient tool to enhance socio-economic development of individual states. Okay, tapare asila confrontation. So eta gala apna competition, which is good, healthy competition hale bhalo. Okay, but interstate problems bhi rahuchi. For example, land disputes rahuchi, water disputes rahuchi. Okay, amaro chalchi border dispute. ओडिशा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रे पानी संगे चलची, वेस्ट बेंगल, आंध्र प्रदेश, ओके तांको संगे पुणी लैंड रो भी चलची। फॉरेस्ट एरिया भी एग्जैक्टली, जोड़ा वेल डिमार्केटेड नुह सेगुड़ा सबु तरे प्रॉब्लम अछि हमन। ओके, सो कन्फ्रंटेशन रो कोन कोन रहिची टिल 1967 after the independence there was hardly any confrontation between federal units as there was single party at center and state. ओके, तो सेटा एस्पिरेशन ସେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁ ବି ନଥିଲେ ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା କହିବ ଏମାନେ କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ଷ୍ଟେଟକୁ ଆସିଲେ ଓକେ ସେଠି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର 1967 there exists a massive confrontation between center state and state and center state. Okay, center state ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା imposition of president rule on the states, misuse of article 356 for political reasons. Okay, जोटा कि हमें एसआर बोमई केस रे तापरे एबे टिके एटा ठंडा पड़िछ। ओके, जदि गवर्नमेंट आडू साडू सेमती किछि कर दबो ताहले सुप्रीम कोर्ट ताको रिव्यू करिकि एबे जेमती हेला ओके किछि वर्ष आगुरु बीजेपी संगरे नॉर्थ ईस्ट रे आ उत्तराखंड रे से माने से चेष्टा करथिले। ओके, बट सुप्रीम कोर्ट सेगुडा ओवरटर्न कर देले, राइट? सो सेटा हला नंबर 1। सो केस नाटा मन रखिबे एसआर बोमई। ये किए थिले एसआर बोमई? कर्नाटक रो चीफ मिनिस्टर थिले और तांको गवर्नमेंट को भी सेमती आर्बिट्रेरली सेंटर डिसमिस कर देथिला। ओके, रिमेंबर दैट एसआर बोमई केस। तापरे मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स बाय गवर्नर। ठीक अछि, सो गवर्नर करो डिस्क्रिशनरी एटा आउ गोटे क्वेश्चन अछि আজি देखिबा से डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर रे। एबे जेंति केरला गवर्नर कहउचंदी कि वाइस चांसलर माने ओके से जा कहउचंदी सेटा मानिबार अछि, अदरवाइज दे विल लूज ओके हिज प्लेजर। लेट अस सी दैट सेटा पर क्वेश्चन। encroachment by center on state list, for example recent farm acts, okay जोड़ा कि हमारा फार्म बिल लुड़ा थिला, encroach upon state list because agriculture and markets are state subjects. ठीक है, GST compensation to state, refusal of government of India of its legal commitment to compensate GST shortfall on account of lower revenue. तो सेटा जोड़ा माने ममता बनर्जी होरिया सब लोग कहउचंदी कि हमर तो एते पैसा होबा कथा ये गवर्नमेंट हमको दउनी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तापरे in 2019 Kerala has challenged Citizenship Amendment Act in Supreme Court, shows confrontation between center and state. तो गोटे स्टेट गवर्नमेंट गोटे सेंट्रल लॉ ओके कु ता अगेंस्ट से चैलेंज करछ। एटा में डॉक्ट्रिन्स जते बेले आपण पढिबे से डॉक्ट्रिन्स रे गोटे डॉक्ट्रिन आपण देखिबे डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी। जस्ट टिके देखिबे सेटा डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी कोन। ओके, imposition of Hindi language on southern states like Tamil Nadu have consistently agitated on this matter. एई कथा पई से माने बहुत गुडे स्कीम्स गवर्नमेंट रो भी एक्सेप्ट करलेनी। फॉर एग्जांपल राजीव गांधी जेते बेले
नवोदय विद्यालय ओके स्टार्ट कले सेतेबेले एमाने तमिलनाडु रे के नवोदय विद्यालय रे हिंदी टा कंपलसरी ओके से माने एक्सेप्ट कलेनी सेटा से माने सेही टाइप रो मॉडल स्कूल्स तांकर बनैले बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट नवोदय विद्यालय हमर ओडिसा रे देखंतु हमर नवोदय विद्यालय स्टूडेंट्स माने सिविल सर्विस रे आपण जो भी वर्ष देखंतु जदि आपण चेन ऑफ स्कूल्स रो देखिबे गोटे हला सरस्वती शिशु मंदिर आ गोटे हला नवोदय विद्यालय ए पिला माने बहुत ही भलो ओके तांकर परफॉर्मेंस थाए तापरे स्टेट रे इंटर स्टेट वाटर ओके डिस्प्यूट्स रहला सो सेटा ता पई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूरा अलगा अछि इवन सुप्रीम कोर्ट रे भी सेतरे बहुत लिमिटेड पावर्स ओके कावेरी डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु महारदी डिस्प्यूट अबारवे okay Odisha and Chhattisgarh other many disputes are there border dispute between states सबुठु मेजर टा हैला बेलगावी और बेलगांव ओके between कर्नाटक and महाराष्ट्र आमर कोटिया पई चलची आउ भी आमर तो पीसफुल चलची एबे but you have seen in north east okay सेठी तो मरामरी भी हे गले security forces okay so these are the cooperative competitive आउ confrontation तीनिटार एग्जांपल्स आपनको दबार अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एनएसएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कोन पय एटा अछि ए टर्म ता हम देश रे यूज हुएनी एते एटा यूएस रे यूज हुए तांकर इट इज रिक्वायर्ड दैट तांकर जे भी प्रेसिडेंट होची से प्रेसिडेंट को तार गोटे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी सेटा डिस्क्लोज करिया पड़ियो तेनु कोन तांकर से भाबुचंती आकु कोन करिवे तांकर नेशनल देशर सिक्योरिटी को नेकी ओके इट इज ए ऑब्लिगेशन ऑन ऑल द अमेरिकन प्रेसिडेंट सेही कांसेप्ट जदि हम इंडिया रे यूज करिवा हमर गोटे सेमती सिक्योरिटी स्ट्रेटजी दरकार ओके द इंडियन स्टेट डज नॉट पोजेस एन overarching national security agency okay like the national security strategy that comprehensively assesses the challenges to countries security and spells out policies to deal effectively with them हमर कोन अछि हमर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आउ ओके सेमती किछि मेकानिज्म रे हम ताको करछु बट एते वेल डिफाइंड आउ लॉन्ग टर्म ओके मे बी एटलीस्ट पब्लिक डोमेन रे तो नहीं सो ए वेल डिफाइंड नेशनल स्ट्रेटजी is a clear vision of the path that India must take in pursuit of national vision तो हमर चाइना टू कोन ओके तार व्यवस्था केमती कोन करिवार अछि Pakistan sangare and already we have considered the okay the two front war आगु जाई कि जदि किछ ओटे प्रॉब्लम हला our army navy and air force are ready for attacks from both sides एपटे चाइना रो एपटे पाकिस्तान right but this strategy must be executed within the parameters laid down by Constitution of India and India's democratic political dispensation. Okay, seta would autocratic rule type ro hele hobari. It has to be under the democratic government. Need for national security strategy. Kon darkar India pai. Modern state confronts multiple and simultaneous challenges across several domains. National security cannot be confined to use of states' coercive power to overcome domestic and external threats. तो हमर अलगा भी यूज करिवार अछि डिप्लोमेटिक रिलेशन सॉफ्ट पावर सबु यूज करिवार अछि फॉर एग्जांपल थ्रेट टू डोमेस्टिक पीस एंड स्टेबिलिटी may arise from economic and social grievances तापरे knee-jerk reaction may leave these grievances unaddressed while the use of coercive power exacerbates rather than ameliorates the situation. For instance, left-wing extremism in India is rooted in the persistent exploitation of tribal population. Okay, tribal land को non-tribal माने नहीं जाउचंती बहुत जगह रे ठीक अछि तो इनिशियली जतले लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म कि मान एक्सेलिज्म जाकू कहउचंती स्टार्ट हैला व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ मजुमदार एंड सन्याल ओके जो कानू सन्याल आउ चारू मजुमदार जो माने ओके सेतरे इन्वॉल्व थिले आपण कहि परिबे इनिशियल स्टार्टिंग रे तांकर आजिकली जो सब जहा करचंती लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट माने सेमितिया कांसेप्ट तांकर नथिला दे वर बेसिकली इट वाज अ सोशियो इकोनॉमिक इशू दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द जमींदार्स ओके जो जो सब स्टेट्स रे प्रॉपर्ली लैंड रिफॉर्म्स हेई पारलानी
सेठी ए नैक्सलिज्म रो प्रॉब्लम हैला जो स्टेट्स रे कम्युनिस्ट माने गवर्नमेंट रे थिले किंबा प्रॉपर्ली लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हे गला सेठी ए प्रॉब्लम हैलानी केरला रे फॉर एग्जांपल त्रिपुरा रे फॉर एग्जांपल ठीक अछि वेस्ट बंगाल रे हैला काहे कि ना वेस्ट बंगाल रे ओके बिकॉज ऑफ दैट the communists came into power ठीक अछि आंध्र प्रदेश रे इनिशियली दैट वाज द बेड a hotbed of your naxalite activity किंतु एबे टोटली ओडिसा घरिकरे भी कमिलानी बट आंध्रा रे ऑलमोस्ट नाही लास्ट मेजर इंसिडेंट तांकर हेतिला केतेबेले चंद्रबाबू नायडू जेतेबेले थिले तांको चीफ मिनिस्टर सेतेबेले तांको पर अटैक हेतिला जो ओके सो नेक्स्ट नीजर रिएक्शन जे देव जेमति कि हमर लेट्स से पुलवामा रे जा हैला हमर नीजर रिएक्शन तापरे कोन ना हमें भाई तांकर जे कि एयर स्ट्राइक कर दियो सर्जिकल स्ट्राइक कर दियो हमर जदी गोटे लॉन्ग टर्म गोल रहइबो ओके सो दैट यू नो ए टाइप रो नीजर रिएक्शन हमें नॉन है कि गोटे प्रॉपर स्ट्रेटजी रे ओके हमें डील करि परिबा एई थ्रेट्स उडा सिमिलरली द वल्नरेबिलिटी of our borders is linked on a large scale smuggling and contraband trade. Such threats cannot be dealt with solely through enhanced military capabilities without addressing the drivers of illegal trade. Sethi, you see what has happened in Arunachal and other places along the line of actual control. China sangat. Sethi semane tanko side re model villages base deichan. Okay. सब रिमोट एरियाज उड़ा हिल ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स रोड इन मेनी केसेस एयर स्ट्रिप्स भी बने दीचन एपट साइड रो जो लोक रहिला ओके सी देखु जी अरे चाइना ताको एते सपोर्ट करू ठीक अछि तो एबे आम गवर्नमेंट भी कहू मॉडल विलेजेस बनेबो बट वी आर फार बिहाइंड चाइना ठीक अछि तो चाइना सेटा मॉडल विलेज देखेगी से एंटाइज करूची आपनकर बॉर्डर पॉपुलेशन आमर बहुत गुडे स्कीम्स अच्छी ओके बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छी इकोनॉमिक्स सब पढ़िए बट सेटा एते भलो कार्यकारी हो पारनी बुझ पाले तो फॉर ए मॉडर्न स्टेट ऑपरेटिंग इन इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड द लाइन बिटवीन व्हाट इज डोमेस्टिक एंड व्हाट इज एक्सटर्नल इज बिकमिंग increasingly blurred. For example, terrorism is a threat to domestic security but may have external links. Thus, a combination of domestic and external interventions may be necessary. It is not only within a comprehensive analysis that such complex interrelationship between domestic and external dimension can be analyzed and coordinated policy responses formulated. So, NSS ro kamo kono, what it should do. Okay, identification of critical infrastructure that may be vulnerable to cyber attacks. How critical infrastructure जो जगह रे अपन को बनेबार अछि लेट्स से हमरो इफ यू सी चाइना बहुत वर्ष है बॉर्डर पाखे रे तार मेजर एयर स्ट्रिप्स बने सच ओके आमे एबे आस्ते आस्ते अरुणाचल रे आउ अलगा जगह रे सब ओके along the line of actual control near the line of actual control सेठी हमें आस्ते आस्ते स्टार्ट करू ओके एटा गोटे आपण डीबीओ एयरफील्ड बहुत दिन है बंद थिला ओके ताको लास्ट ईयर खोला है डीबीओ कौन दौलत बेग ओल्डी ओके ता नाटा से बाहर करन एटा को राज्य रे अछि दौलत बेग ओल्डी पहले which state सेटा आपण काम रहला आपण कहबे पोस्ट स्टेट रु बाहर सेटा ओके सो नॉर्थ ईस्ट रे स्पेशली अरुणाचल ओके आउ जोड़ा से क्लेम करूची चाइना सेठी से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेबार अछि आउ एज सच जनरल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा एबे साइबर वारफेयर रे ओके प्रभावित हे परियो फॉर एग्जांपल यू सी रशिया जो अटैक कर यूक्रेन को तो से माने साइबर अटैक करी भी पावर स्टेशंस करिका को कंट्रोल कर दउचंती इवन न्यूक्लियर पावर स्टेशंस करिका को भी एपट सेपट कर दे परिबे ओके सो सेटा चाइना रो से कैपेबिलिटीज बहुत अधिक अछि राइट सेकंड हैला ट्रेड ऑफ बिटवीन एनहांस सिक्योरिटी एंड सिटीजंस राइट गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन
सो ये गोटे बहुत ही टची सब्जेक्ट राइट कि आपण पर्सनल लिबर्टीज आउ नेशनल सिक्योरिटी भितर बैलेंस टा केमती मेंटेन करके रखिबे कहीं ना आमे बेसिकली एबे राइट बेस्ड सिटीजन सही गलुनी बेसी ओके तो राइट्स हमरो समस्त को जाना अछि वी आर वेरी वेरी टची अबाउट आवर राइट्स ओके चाहे हमें ड्यूटी करू कि न करू राइट टा हमको जाबे हेले दरकार ठीक अछि सो national security must not be a justification for a surveillance state you see what is happening in China China रे सब almost entire population को face recognition system रे मार्क कराइछ ओके से लोक कुआडे बुलची कोन करछि मींस कंप्लीटली इट इज अ सर्वेलेंस स्टेट ओके तापरे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी ओके यदि किसीरा एग्जांपल सेठी दला कि ग्लेशियर वरिका जो मेल्ट होछ ओके तो सेगुडा हमरो नेशनल सिक्योरिटी ऊपर भी प्रभाव पकेबो ओके there may be direct consequences of melting of glaciers on the deployment of troops at high altitude location in India's mountainous borders. Sea level rise as a result of global warming may inundate naval bases along the coast. Therefore, NSS must anticipate the consequences of ecological degradation and climate change and formulate coping measures. Okay. Another thing is strategic communication. We have to have proper communication systems, proper communication infrastructure. Okay. Tapare, national security may be adversely impacted by the spread of false news, okay, by hostile elements within and outside the country using social media. तो कौन रॉयट्स फॉइड स्टार्ट करिया भाई ओके ओडे फेक न्यूज़ दे देले भी र्यूमर कर देले भी रॉयट्स करिका स्टार्ट हे जी पाउछ okay so finally comprehensive approach encompassing domestic and external economic and ecological challenges okay economic issues भी रोचे हमरो fake Indian currency notes रहिला okay तापरे lot of other issues cross border जोटा हमें फेस करू छु okay एबे पाकिस्तान फैटर ग्रे लिस्ट रे थिला तो ताको फंडिंग आसुनथला एबे अमेरिका ताको हटाई देला ग्रे लिस्ट okay as a you can say that is basically against a step against India जेतु ता कथा सुनलानी रशिया रु तेल किनला बाकी जे हमर जा इच्छा हमें करछु हमर नेशन रो नेशनल इंटरेस्ट को देखि के हमें काम करछु ओके हमें अमेरिका रो कोन भलो हबो खराब हो सी कोन बाबूजी वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट ओके सो फॉर दैट आल्सो योर NSS is required okay so drawing up NSS for India must be key agenda of the government in a democracy NSS should be citizen centric and must reflect the values and beliefs of the people previous exercises undertaken to promote national security could serve as useful reference material for NSS so Kargil review committee report Naresh Chandra task force on security okay and various the NSA advisory board एमाने सब जा जा कहिचंती ताको रिपोर्ट से well informed vigilant and educated public opinion is the best assurance of national security well informed vigilant educated public opinion okay so जोटा हम कहउतली doctrine of pleasure okay एबे कोन ही कि what is the, why this it is in news तो जे आपनकर Kerala governor achandi okay so he wanted the lot of VCs to resign ठीक है recently Kerala governor warned ministers that statement of individual ministers that lower the dignity of governor office can initiate action including withdrawal of pleasure okay so what is this eta roila vice chancellors को भी से कहतिले कि आपण you put in your papers okay the pleasure doctrine is a concept derived from English common law under which the crown can dispense with the service of anyone in its employ at that time तो जाको बिचा बाहर कर दे परिवे in India article 310 of the constitution says that every person in the defense or civil service of union holds office during pleasure of president and every member of civil service of the state holds office during pleasure of governor it is a doctrine of pleasure however article 311 imposes restrictions on removal of a civil servant
It provides for civil servants being given reasonable opportunity for hearing on the charges against them. So arbitrarily just kal taku bahar kar paribe. Okay, so 310, 311 is the one. There is also provision to dispense with the inquiry if it is not practicable to hold one, or if it is not expedient to do so in interest of national security. Under Article 164, Chief Minister is appointed by Governor and other ministers are appointed by Governor on the CM's advice. So it adds that ministers hold office during pleasure of Governor. In a constitutional scheme in which they are appointed solely on CM's advice, the pleasure referred to is also taken to mean right of the CM to dismiss a minister and not that of the governor. Okay, so it is differentiation. Case laws. So this is basically pleasure of the prime minister, okay, or pleasure of the chief minister towards his ministers. Okay, governor, kimba president, right? Generally, that is not constituted in that way. Okay. In other words, governor of an Indian state cannot remove a minister on his own. So Supreme Court cases, first Shamsher Singh and another, ANR one another, okay, versus State of Punjab, 1974. In this case, 7-judge Constitution Bench of Supreme Court said that President and Governor, custodian of all executive and other powers under various articles, shall exercise their formal constitutional powers only upon and in accordance with the advice of their ministers, save in few well-known exceptional situations. Okay, so Shamsher Singh versus another and State of Punjab. Next, Navam Rebia and etc. versus Deputy Speaker and others, 2016. In this case, Supreme Court cited the observation of Babasaheb Ambedkar, the governor under constitution has no function which he can discharge by himself. Very, very important. Okay. Governor under the constitution has no function which he can discharge by himself, no functions at all. While he has no functions, he has certain duties to perform, and the House will do well to bear in mind this distinction. Okay. बुझिपारे तांकर फंक्शन किछि नाही किंतु ड्यूटीज अछि. Supreme Court ruled that Article 163 of the Constitution does not give the governor general discretionary powers to act against, okay, or without the advice of Council of Ministers. So overall, Supreme Court aya koichi ki governor semti arbitrary action nei paribeni, तांको चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करो, ओके, तांको हिसाब रे से एक्शन नहीं परिबे. Mahavir Prasad versus Prafulla Chandra, 1969, the case revolved around the question of nature of governor's pleasure under Article 164 clause 1. The governor's pleasure under Article 164 for 1 clause 1 is subject to Article 164 clause 2. Thus, withdrawal of governor's pleasure must coincide with withdrawal of support to the ministry by the assembly. Okay, so एटा से जा कहउचंदी केरला रा गवर्नर सेटा possible no. So constitutional provisions kono related to this. Article 153, okay, there shall be a governor for each state and all. A governor is appointed by president and is nominee of the central government. Data important what is the nominee. He is not a political agent of the center. Okay. It is stated that governor has a dual role. He is the constitutional head of the state bound by advice of Council of Ministers. He functions as a vital link between union and state government. Article 157, 158 specify eligibility requirement for the post of governor. So these are question ta kon pacharchi eta ete important ho ame skip kar pariba. Pleasure doctrine ta kon etiki amara, okay, case law porjanta thik achi. You can go through this part. Fiction points kon governor state relation. Okay, the जो माने पावर रे अछंती स्टेट गवर्नमेंट जे पावर रे अछि सी एटा केबे भी चाहबोनी, ओके, कि
2,500 आपके Just a minute. Okay, कि से गवर्नर किसी गोटे अलग इंडिपेंडेंट पाथ नेबे ओके से गवर्नर जेंते रबर स्टैम्प हे कि रुहन तो समझते से चाहिए सब स्टेट सो गवर्नर शुड बी अपोलिटिकल तो गवर्नर को साइड भी आजकल बहुत भूल रोची से माने सेंट्रल गवर्नमेंट रा पॉलिटिकल एजेंट भलिया काम करछन बहुत जगह रे ओके सो गिविंग और withholding assent to a bill passed by state legislature determining the time needed for party to prove its majority and which party to be called first एगुड़ा सब पॉलिटिकल डिसीजंस रहबा कथा बट मोस्ट केसेस रे देखा जाउची ए डिसीजन उडा परे जाई सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज होची there are no provisions laid down for manner in which governor and the state must engage publicly when there is a difference of opinion तो केते जगह रे सेटा सिविल वे रे सेटा हे जाय सॉल्व हो जाए केते जगह रे फॉर एग्जांपल एबे जे वाइस प्रेसिडेंट अछंती आगुरु गवर्नर थिले बेंगल रो सेठी बहुत प्रॉब्लम्स होतिला बिटवीन ममता बनर्जी एंड हिम ओके सो गवर्नर एज a 5-year tenure he can remain in office only till pleasure of president in 2001 the national commission to review the working of constitution held that governor owes his appointment and his constitution continuation to the union there is apprehension that he is likely to act in accordance with the instructions received from union council ministers तेणु से पॉलिटिकल एजेंट हिसाब से काम करेंगे ओके अब वो जगह हेच भी सेटा इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर नो गाइडलाइंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ गवर्नर्स पावर इंक्लूडिंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम और डिसॉल्विंग ऑफ असेंबली देयर इज नो लिमिट सेट फॉर हाउ लॉन्ग ए गवर्नर कैन विथहोल्ड assent to a bill the governor sends a report to the center which forms the basis of the union cabinet's recommendation to president for invoking article 356 president's rule so सेटा गवर्नर का रिपोर्ट अनुसार ही हुए what attempts have been made to address concerns over alleged partisan role played by governor changes regarding selection of governors okay the national commission to review the working of constitution appointed by Atal Bihari Vajpayee government in 2000 suggested that governor of a state should be appointed by the president after consultation with chief minister of the state the sarkariya commission कोन proposals देथिले 1983 रे okay it was set up vice president of india and speaker of lok sabha should be consulted by prime minister in selection of governors punchi committee okay justice Punchi committee 2007 on center state relation proposed in its report that a committee comprising of prime minister home minister vice president speaker and concerned chief minister should choose the governor tale gote wide okay consensus rahibo the Punti committee recommendation deleting the doctrine of pleasure from constitution okay but backed the right of governor to sanction prosecution of ministers against advice of state government so deleting the doctrine of pleasure from the constitution and the Punti committee recommend it also argued for provision for impeachment of governor by the state legislature jota ki ebe nahi governor can be removed by the center okay but ताको impeachment of okay से प्रोविजन नहीं सेटा से कहथिले ताको इंक्लूड करिया कथा सो गवर्नर ता माने कोन गवर्नर जदी गोटे किछि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन नेले ओके तापर सेंटर ताको इजीली बेल आउट कर देबो ताको ट्रांसफर कर देबो ताको रिमूव कर देबो जाबी ओके बट तापर ताको ताको ऊपर किछि खबर नहीं राइट तो से इम्पीचमेंट टाइप रो प्रोसीडिंग की रिमूवल टाइप रो प्रोसीडिंग्स रहिबा कथा दिस वाज वन ऑफ द रिकमेंडेशन so what is the way forward so when governors may differ with content of bill and may exercise the available constitutional options they should not use their power to stall legislation unpalatable to them kimba jodi prayto sobu governors okay ruling party ro thanti center re je rule korte to seman jodi ki instruction deite you know what was the situation earlier political lokon ko ete governorship diya honotila मेनली आईएएस ऑफिसर माने ब्यूरोक्रेट्स आउ आर्मी ऑफिसर सीनियर आर्मी ऑफिसर्स तांको दिया होतला राइट बट तापर ट्रेंड आरंभ होला पॉलिटिकल जहां को हमें कहि परिबा पेंशनर्स ओके पॉलिटिकल पेंशनर किए ना जे एक्चुअली दल रे रहिले से एक्चुअली बहुत हैरान करिवे तो तांको भाई बने दियो
ओके गवर्नर आउ ताको आउ को स्टेट को पठे दियो बेस्ट तो सी भी खुशी मते गोटे कोन पावर मिलला जा भी ओके आउ से एक्टिव पॉलिटिक्स उस बाहरी होले राइट सो गोटे माने रिहैबिलिटेट करिया पे ओल्ड लोकन को किंबा जे थ्रेट थाई परंती ओके दैट वाज कंसीडर्ड इन दैट वे ओके next it is time to implement the principle of Punchi Commission, which reviewed center-state relation, recommended the governors should not be burdened with the role of chancellors. So both state ebe seguda kalen. Because sabu public university ro governor hele chancellor. Okay. Many states are jemti West Bengal re se chief minister कहले मु निजे हे जिवि chancellor. Okay. sabu university ro. तो governor को to से role टा निया वाला. Right. Political लोग भी हवा करते no, but anyway, जब you governors seem to have an exaggerated notion of their own roles under the constitution. They are expected to defend the constitution and may use their powers to caution elected regimes against violation of constitution. But okay, but this does not mean that they can use the absence of time frame for decision making and the discretionary space given to them to function as a parallel power center. Okay. Last question. This is about current affairs. Even news right? That is the Kala Namak or the Buddha rice. Right. So it's a traditional type of rice with black husk and powerful fragrance. It is about to get a new look and name. The rice is thought to have been a gift from Lord Buddha to the people of Sravasti. Okay, that was the capital of ancient Koshala. And his following his enlightenment. এটা তা ব্যাকগ্রাউন্ডটা সো এই যে কালা নামক রাইস ওকে আর নিউট্রিশনাল ভ্যালু কোন ওকে লেট us see also known as buddha rice kala namak is a scented okay so fragrance এটা one of the finest and short grain rice with unusual black husk okay kala right it is currently grown in 11 districts of Tarai region of northeastern Uttar Pradesh and in Nepal specifically in Kapilavastu okay this rare rice has been awarded the geographical indicator tag in 2013, which recognized Siddharth Nagar as the adjacent district and the adjacent districts for the tag. Okay, Uttar Pradesh. Under one district, one product scheme, it has earned the Prime Minister Award for Excellence in Public Administration in 2021. It was featured in the book Specialty Rice of the World by the Food and Agriculture Organization of the UN. Okay. So, tapare related to some other details about it. Lodging is a condition in which the top of the plant becomes heavy because of grain formation and stem becomes weak. So, weight hai jai adhika and the plant falls to the ground. Okay, that is lodging. The dwarf varieties, that is the Pusa Narendra, Kala Namak 1638 and 1652 eta Indian Agricultural Research Institute tako develop karich. Okay. The plan was to combine the high yielding properties with the quality of traditional Kala Namak. In that process, which has started in 2007, the breeding program was conducted by bringing the dwarf genes from rice varieties, okay, Bindli mutant 68 and Pusa Basmati 1176 after crossing it with Kala Namak. The objective was to bring dwarfness into the variety. Dwarf mane chota, okay, je ki tar height ta chota thibo tale ei lodging ro problem ta hoboni gen and make the plant sturdy to prevalent lodging. Attack of blight bacterial disease has also been addressed by inducting blight tolerant genes. The new name is in recognition of the Association of Institute, okay, has the Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology in Ayodhya, where the two varieties were tested. The new breed has a stronger aroma and superior nutritional characteristics. Productivity has increased 4.5 to 5 tons per hectare, up from 2.5 tons in traditional Kala Namak. Okay, that is tamane kono yield adhika bodichi. Advantage kono aro? So it is rich in micronutrients such as iron and zinc and can help
prevents Alzheimer's disease. Okay. It also contains 11% protein, which is almost double the common rice varieties. Okay, 11% protein ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳୁଛି ଯୋଉଟା normal rice to double. Besides, it has low glycemic index, 49 to 52%, making it sugar free and suitable for even diabetic people. Generally, diabetic लोगों को rice avoid करो, तो आरो GI index टा कम. It also contains antioxidants such as anthocyanin, which is useful in preventing heart disease and also helping in improving the health of the skin. It has also been found helpful in regulating blood pressure and blood related problems. Okay, tapre IARI upare कहला that you can go through बहुत गुडे हमरो okay जोटा agriculture related नुआ technologies गरिका सेटा हमें IARI रो पाउछु. Okay, you can just go through that. But a pre-time भी अपन करो, you can expect some questions from that. Okay, so what is to be done now? जो माने prepare करचंती next year ପାଇଁ, so you will get this. Okay, आओ half an hour पर से link टा check करिवे, update हे दिवो. निजे time बाहर करी कि first पढ़ी दियंतु, then try to write it. 10टा question तो maybe समस्त लेखि न पारंती दिनरे, but दी तीनटा रु start करंतु at least. Okay, model answer रहिला आपण पाखरे, so ताकू प्रथमे दी तीन थर कि चार थर कि जेथर दरकार पढंतु, concept टा बुझंतु, निजे यदि value addition आउ किछु करिवे करंतु. But when you write the answer, do not take the help of okay कोनोसी आउ आपण ताकू देखिबेनी कि कोनोसी aid रो help नेबेनी, directly लेखिबे सेटा. Okay, you can take your time prior to that for understanding it, okay, for reading it. बुझिपाले? So tomorrow we will have history and current affairs. Last class रे से जो दीटा क्वेश्चन दिया आइतला केते जण करी की पठै जंती. Okay, woman in revolt of 1857 number 1 और second थिला ओडिसा रे जो माने ओडिसा रो मेजर लीडर्स in the revolt of 1857. तो सेटा जो माने कर दे जंती, we will discuss that tomorrow. Otherwise, okay, ताकू टिके आजि चेष्टा करंतु सारिया पे. Okay, so tomorrow's question you will get, tomorrow's 10 question you will get tomorrow morning. Okay, तो आपको entire data मिलुची, हमें 9 टाले start करछु, सकाळ 10 टा around आपको मिल जिवो. You are getting around 10 hours plus. Okay, so just go through the 10 questions so that you can participate in the discussion. Fine, so we'll stop here then unless you have some doubts. Sir, one Thank you, doubt, sir. sir. Kunt. Sir, how many months of current affairs for the next year, sir? Means normally for the examination for OCS. Six through 1 year. 6 months most important, 1 year overall. 6 months most important, sir. 6 months ta basic important. Sir, Up mane to sir. 1 year. Okay, sir. Okay. Okay. Anything else? Anyone would like to ask anything? Sir, I want to talk to you for 2 minutes, sir, after the class. Not an issue. Okay, you can give me a Okay. call Okay, or sir. WhatsApp me. Right? Okay. Yes. Anyone else? Fine. So after 15 minutes, you can download this. Okay. ग्रुप रे आउथरे जो माने नुआ जी जॉइन करचंती, ग्रुप रे लिंक टा दे देबी, से गोटे लिंक रहइबो, से तुरु आपण सब दिन अपडेट होतिबो. You can keep on downloading that far. Okay. So sir, हाँ कुंत. sir, question टा अपन जो मॉर्निंग के तो एटा वन डे माने आदि मिल पाइबो के सर हमते हेई परबो. एक्चुअली मॉर्निंग आवर टाइम होने ऑफिस ड्यूटी रहउछ तो आइतले मॉर्निंग आवर टाइम रह टिके तो माने आपण गोटे दिन आगुरु क्वेश्चन देले ताकू प्रिपेयर करी कि हां मॉर्निंग टा एक्चुअली जो मॉर्निंग आवर टा पूरा 8 टा पर टाइम था सर 8 टा पर पूरा टाइम होने इवन राते 8 टा पर पूरा बिजी रहता है तो ओके. तो सेटा के सर सुविधा होता. Let us see if we can do that. Okay. Okay, thank you sir. Okay, fine then. So we'll stop here. We'll meet tomorrow at 9.